using AC or we're going to try to open the windows? हमें AC चलाना चाहिए या खिड़की खोलनी चाहिए? We have to make a choice because we can't do both. हमें एक चुनाव करना होगा क्योंकि हम दोनों नहीं कर सकते. Is there a breeze? क्या ठंडी हवा चल रही है? There's no breeze? नहीं है ना? ठंडी हवा नहीं चल रही? Is that door is open or closed? Closed. Okay. That's on? Yes, it's on. All the fans are on? सारे पंखे चालू हैं. Are you ready? आप तैयार हैं? Did your mother run away? क्या आपकी माँ भाग गई? She's still here? अभी भी यहाँ है. All right. Okay. ठीक है. She's a brave soul. बहुत बहादुर आत्मा है. This is very important discussion we're going to have tonight. आज की रात बहुत महत्वपूर्ण I चर्चा hope you होने took वाली है. nice rest, nice prasad. I hope you have a lot of strength. मैंने अच्छे से आराम किया, अच्छे से प्रसाद दिया है, बहुत शक्ति है मेरे अंदर. Should we get this other fan, the stand-up fan also? Yes. Hare Krishna. Shri Gaurita Ki Prabhupada Ki Srila Govinda Swami Sudadev Ki Veda Bhaktivedanta. Namo Vishnu Padaya Krishna-katha Hari-katha Srimate
Srila Prabhupada ki Srila Govinda Swami Srila Gurudev ki Samaveda Bhakti Vrinda ki Side effects Das ki He gets carried away once in a while. कभी-कभी बीच में थोड़ा भटक जाते हैं. That's Adam Ant. ये एडम एंट है. I call him Adam Ant. हम इनको एडम एंट बुलाते हैं. Affectionately, of course. और अवश्य प्रेम से हम बुलाते हैं. स्नेह से. Om Jnana-timirandasya Gananjana Salakaya Chakshurunatājena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kalamayam Dadati Swapadamtikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Sha Shri Rupam Sagadatam Sahagana Sadhyutam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapte Gopesha Gopika-katha Hari-katha Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vṛṣṇi Sudevi Pranamami Haripe Vajrapapa Trudiyascha Kripa Sindhu Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namde Gaura Krishe Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Shri Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Grantha Srimad Bhagavad Gita ki. So you're getting a taste for chanting, I see that. आपको जप में रस आ रहा है तो. That's a good sign. ये अच्छा संकेत है. Very nice. बहुत ही अच्छा. This is how Krishna will purify us and attract us. इस तरह से कृष्ण हमें शुद्ध करेंगे और हमें आकर्षित करेंगे. Right now we're in a diseased condition of life. अभी हमारे जीवन में हम बीमार स्थिति में. So Chetodharpan Marjana means we need to purify our contaminated consciousness. तो चेतोदर्पण मार्जन का अर्थ है हम अपने दूषित चेतना को शुद्ध करना होगा. Because we've become very dull. क्योंकि हम बहुत अल्प बुद्धि वाले हो चुके हैं. So we need to purify, simplify and purify. तो हमें शुद्ध करना और सरल करने की जरूरत है. Get back some spiritual intelligence. और आध्यात्मिक बुद्धि वापस पाने की जरूरत है. Otherwise, how we can understand anything properly? वरना कैसे हम कुछ भी सही तरीके से समझ पाएंगे? How we'll be attracted to Krishna? कैसे हम कृष्णा के प्रति आकर्षित हो पाएंगे? Krishna says, if you get higher taste, you can let go of lower taste. कृष्ण कहते हैं अगर आपको ऊंचा स्वाद मिलेगा, तब आप नीचे के स्वाद को छोड़ पाएंगे. So we better get a higher taste if we want to let go of lower taste. तो बेहतर होगा हम ऊंचा स्वाद पा लें, तभी हम नीचे के स्वाद को त्याग कर पाएंगे. So let's discuss Krishna consciousness now. तो चलिए अब थोड़ा कृष्ण भावनामृत के ऊपर चर्चा करते हैं. We're going to read a very important topic in the 3rd chapter of Bhagavad Gita. तो हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भगवद गीता के 3रे अध्याय से पढ़ने वाले हैं. The Karma Yoga. अध्याय का नाम है कर्म योग. And we can start at 336. श्लोक संख्या 336. Please repeat. कृपया दोहराइए. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
Arjuna Vacha Ata Kena Prayukta Ayam Papam Charati Purusha Anichan Api Vṛṣṇi Balad Iva Niyojita Arjuna Vacha Atakena Prayuktoyam Apam Charati Purusha Anichan Api Vṛṣṇi Balad Iva Niyojita Arjuna Uvacha. Arjuna said. अर्जुन ने कहा Ata. Then. तब Kena. By what? किसके द्वारा Prayukta. Impelled. Forced. बाध्य किया जाता है I am one. कोई Papam. Sins. पाप Charati. Does. करता है Purusha. A man. कोई व्यक्ति Anichan. Without desiring. बिना इच्छा के Api. Although. यद्यपि Vṛṣṇi. O descendant of Vṛṣṇi. वृष्णि के वंशज Balat. By force. बल से Eva. As if. जैसे कि Niyojita. Engaged. नियोजित किया जाता है Translation and purport by Srila Prabhupada. अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का Arjuna is inquiring from Lord Krishna. तो अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं And he says, O descendant of Vṛṣṇi, और पूछ रहे हैं वृष्णि के वंशज by what is one impelled or forced to commit sinful acts? कौन से किससे कोई बाध्य होता है पाप कर्म करने के लिए Even unwillingly, यद्यपि उनकी कोई इच्छा नहीं होती पाप करने की as if engaged by force. तो जबरदस्ती वो पाप करने को मजबूर होते हैं Purport by Srila Prabhupada. श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य A living entity, the Atma is part and parcel of the Supreme, जीवात्मा परम भगवान का अंश है is originally spiritual and pure, मूल रूप से वो आध्यात्मिक है और शुद्ध है and free from all material contaminations. और सारे भौतिक कलमशों से भी मुक्त है Every soul is a sadhu. हर एक आत्मा एक साधु है Therefore, by nature, he is not subject to the sins of this material world. इसलिए स्वभाव से इस भौतिक जगत के पाप कर्म से उसे प्रभाव नहीं होता But when he is in contact with this material nature, लेकिन जब वो इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है this asat, असत के संपर्क में then he acts in many sinful ways without hesitation, तो बिना किसी हिचक के वो पाप कर्म करने में लगा रहता है and sometimes even against his will. और कभी-कभी अपनी इच्छा के विरुद्ध भी पाप करता है As such, Arjuna's question to Krishna is very important question इसीलिए अर्जुन का ये प्रश्न कृष्ण को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है as to what is this perverted nature of the living entities. तो ये जीवात्मा का ये कैसा स्वभाव है Although the living entity sometimes does not want to act in sin, यद्यपि जीवात्मा कभी-कभी पाप कर्म नहीं करना चाहता he is still forced to act. तभी वो मजबूर होता है पाप करने के लिए These sinful actions are not, however, impelled or forced by the Supersoul within. यद्यपि ये सारे पाप कर्म परमात्मा उनको करने के लिए बातें नहीं करते But are due to another cause, लेकिन ये दूसरे कारण से होता है as the Lord explains in this next
verse. जैसे भगवान ने अगले श्लोक में बताया है। So Arjuna is asking, what is it that is forcing a person to commit sinful activity? अर्जुन पूछ रहे हैं वो कौन सी चीज है जो किसी को पाप कर्म करने के लिए मजबूर करती है। Even they know they're going to suffer. उनको पता होता है So even unwillingly he's forced to do. तो अपनी इच्छा के विरुद्ध वो पाप करने को As मजबूर if engaged by force, is being forced to do. जैसे उसको मजबूर होना पड़ रहा है पाप कर्म करने के लिए। So what is behind this? तो इसके पीछे क्या है? Then Krishna says, Shri Bhagavan Uvacha Kama Esha Krodha Esha Rajo Guna Samudbhava Mahashano Mahapapma Vidyenam Iha Varinam. Krishna then says to Arjuna in reply to his question, तो कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हुए बताते हैं, it is lust only, Arjuna, केवल काम है अर्जुन, which is born of contact with the material modes of passion, Rajaguna. और जो जन्म होता है जब आप रजोगुण के भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं, And later is transformed into wrath or anger. और बाद में यही काम क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। So where there is lust, then there is also anger. तो जब काम आता है तो उसके बाद अवश्य क्रोध भी आता है। And this lust is the all-devouring sinful enemy of this world. और कहते हैं ये काम मनुष्य का विनाश करने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। And Acharyas, Vaishnava Acharyas, they explain that everyone in this material world is affected by this lust. और वैष्णवाचार्य बताते हैं इस भौतिक जगत में सभी काम से प्रभावित हैं। It says even from Lord Brahma all the way down to Indra Gopa. कहते हैं ब्रह्मा से लेके एक इंद्र गोप तक काम से Do you प्रभावित know what is Indra Gopa? आपको पता है इंद्र गोप Even क्या an होता है? ant. Let's जैसे say Adam ant. मान लेते हैं चींटी, जैसे From एडम, Lord Brahma down to the ant, everyone is affected by this lust. ब्रह्मा से लेके चींटी तक सभी काम से प्रभावित हैं। And this lust is the all-devouring sinful enemy of this world. और ये काम सभी विनाश करने वाला सबसे बड़ा शत्रु है इस भौतिक जगत। This is the heart disease. ये है हृदय का This is where the weakness is coming from. यहाँ से वो हृदय की This दुर्बलता is है। where the ignorance is coming यहाँ from. से ये सारा ज्ञान आ रहा है। This is why we're not automatically being attracted to Krishna consciousness. इसीलिए हम स्वाभाविक रूप से कृष्ण भावनामृत के प्रति आकर्षित नहीं Because of होते। this heart disease, this attachment to lust. इस हृदय रोग की वजह से, इस आसक्ति, काम के प्रति आसक्ति की वजह से। Prabhupada explains that when the living entity comes in contact with this material creation, his eternal love for Krishna is transformed into lust. प्रभुपाद बताते हैं जब जीवात्मा इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो उसका नित्य प्रेम कृष्ण के प्रति परिवर्तित होकर काम में बदल जाता है। Because of this close proximity and association with this Rajagun. क्योंकि रजोगुण के बहुत नजदीक में संपर्क में आने की वजह से। In other words, this sense of love of God, it becomes transformed into lust. और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भगवान के प्रति प्रेम परिवर्तित होकर काम में बदल जाता है। As milk in contact with sour tamarind is transformed into yogurt. जैसे दूध में खट्टा पदार्थ डाल देने पे वो दही में परिवर्तित हो जाता है। And then when the lust is unsatisfied, और जब काम संतुष्ट नहीं होता, then it turns into wrath, it turns into anger, frustration and anger. तो ये क्रोध में और हताशा में परिवर्तित हो जाता है। And that wrath, that anger is then transformed into illusion. और फिर वो क्रोध मोह में परिवर्तित होता है। And illusion, this is what is continuing this materialistic existence. और इस मोह की वजह से ही आपका भौतिक अस्तित्व बना रहता है। So Prabhupada says, therefore this lust is the greatest enemy of the living entity. जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं ये काम जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। And it is lust only which induces or forces the pure living entity to remain entangled in this material world. और इस काम के वजह से ही शुद्ध जीवात्मा इस भौतिक जगत के बंधन में हमेशा फंसा रहता है। How many times today do we remember this point that lust is the greatest enemy of the living entity? दिन के कितने समय में हमें हमारी चिंता रही थी कि काम जो है जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। When you're fighting in a battle and a war, do you forget who is your enemy? क्या आप जब युद्ध कर रहे होते हैं जंग में तो क्या आप भूल जाते हैं कि आपके शत्रु So कौन that हैं? means that the enemy has kept us in ignorance and illusion इसका मतलब शत्रु ने हमें अज्ञान में और मोह में because बंद कर we're रखा not है, even thinking about it. क्योंकि हम इसके बारे में सोच भी नहीं रहे। That means already captured. इसका मतलब हम पहले से ही हम फंसे हुए हैं। You see? So this lust
This is what is keeping us here in this material world and material consciousness. तो ये काम ही हमें इस भौतिक जगत में भौतिक चेतना में बनाए रखता है। This is what is entangling us. ये हमें बंधन में रखता है। So if we want to get out of material consciousness, out of material world, out of birth and death, repeated birth and death, we must overcome this enemy. तो अगर हम माया से बाहर आना चाहते हैं, भौतिक प्रकृति से बाहर आना चाहते हैं और जन्म मृत्यु से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें इस काम से बाहर निकलना होगा। Therefore, this lust is the greatest enemy of the living entity. इसलिए कहते हैं ये काम जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। And then this anger that's coming from the lust, और फिर ये क्रोध जो काम से this उत्पन्न is होता है, all manifested in a mode of tamagun, ignorance. ये सब तमोगुण अज्ञान में प्रकट होता है। So all of this tamagun or rajagun, this is all under modes of material nature. तो ये सारे तमोगुण रजोगुण भौतिक प्रकृति के अधीन होते हैं। And this is all forcing to commit sinful activities. और ये मजबूर करते हैं पाप कर्म करने के लिए। So because of mountains, Himalayan mountains of sinful activities and sinful reactions, then so much ignorance has come over us. तो हिमालय पर्वत जैसे पाप कर्मों के फल हैं, अज्ञान है, तो इसीलिए हमें बहुत सारे दुख में रहना This पड़ता है। lust and the tamagun, rajagun is just covering over the pure identity of the living entity. तो ये काम और रजोगुण शुद्ध जीवात्मा के असल अस्तित्व को ढक कर रखता है। Therefore, this lust, Prabhupada says, it must be purified and then transformed into love for the Supreme Person. इसलिए श्री भगवान बताते हैं इस काम को परिवर्तित करके भगवान के प्रति प्रेम में बदलना होगा। Then both lust and wrath, this lust and anger, you can spiritualize it. तब इस काम और क्रोध को आप आध्यात्मिक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। So Hanuman, the great servitor of Lord Ram, he exhibited his wrath by burning the golden city of Ravana. तो हनुमान भगवान श्री राम के भक्त ने अपने क्रोध को प्रकट किया लंका के स्वर्ण शहर को जलाकर। But by that anger, by that fighting, he became the greatest devotee of the Lord. और उस युद्ध को करके और उस क्रोध को प्रकट करके वो भगवान के सबसे बड़े भक्त बने। And here at Bhagavad Gita, the Lord is inducing Arjuna to engage his wrath or anger upon his enemies for the satisfaction of the Lord. और यहाँ भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना क्रोध प्रकट करने के लिए कह रहे हैं, शत्रुओं से लड़ने के लिए और परम भगवान की संतुष्टि के लिए। Therefore, this lust and wrath, when they're employed in Krishna consciousness, they will gradually get purified and spiritualized and become our friend instead of our enemy. तो ये काम और क्रोध जब हम कृष्ण भावनामृत में लगाते हैं तो ये आध्यात्मिक रूप में परिवर्तन होके हमारा मित्र बन जाता है, हमारा शत्रु बनने की बजाय। Then Krishna is explaining that as a fire is covered by the smoke, तो फिर बताते हैं श्री प्रभुपाद भगवद गीता में कि जैसे आग धुएं से ढका होता है, as a mirror is covered by dust, जैसे दर्पण में धूल लगी होती है, or as the embryo is covered by the womb. जैसे गर्भ जो है वो जब बच्चा जो है वो भ्रूण में ढका होता है, गर्भ में ढका होता है। Similarly, the living entity is covered by different degrees of this lust. उसी तरह जीवात्मा काम के अलग-अलग डिग्री में ढका होता है। So it's not all the same. तो सभी एक नहीं होते। Everyone has the same problem, but it's more or less. सबके पास एक जैसी समस्या है, लेकिन किसी के पास कम है Depending और on ज्यादा है। our association with modes of material nature निर्भर करता है हमने कैसे भौतिक प्रकृति के साथ संग किया है and our degree of sinful thoughts and activities and sinful reactions. और जितना हमारे पाप कर्म के विचार हैं, पाप कर्म की इच्छाएं हैं और पाप कर्म हमने किया है। But this lust, there are 3 degrees of covering of the living entity by which his pure consciousness is being obscured or covered. तो श्री प्रभुपाद बताते हैं 3 तरह के काम हैं जिसके माध्यम से ये शुद्ध जीवात्मा ढका होता है। So this covering is just lust under different types of manifestations. तो ये आवरण जो है एक तरह का काम ही है जो अलग-अलग रूपों में प्रकट हो रहा है। So that means there's a cleansing process that has to clear out all of this lust, different layers of lust in the heart, which is the heart disease. तो ये सफाई करने की प्रक्रिया है जो हृदय में काम है, जो हृदय रोग है, इसको साफ करने की प्रक्रिया, शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। And the best process, Prabhupada says, is to chant the holy names of the Lord. और श्री प्रभुपाद बताते हैं सबसे श्रेष्ठ प्रक्रिया है भगवान के दिव्य नाम का जप करना। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna is purest of the pure. कृष्णा सबसे शुद्धता में भी शुद्ध So है। we somehow or other have to hear about Krishna, we have to chant about Krishna, we need to associate with Krishna. तो किसी तरह से हमें कृष्ण के बारे में कीर्तन करना है, कृष्ण का श्रवण करना है और किसी तरह कृष्ण के साथ संग करना है। In order that all of this material contamination, all of this lust, all of this false ego, all of this thing can be gradually purified and removed in order to liberate the soul. ताकि धीरे धीरे ये काम, सारा मिथ्या अहंकार, धीरे धीरे ये सारी चीजें खत्म हो जाए और शुद्ध जीव बाहर आ जाए। But how many people realize they're in that condition? लेकिन कितने लोग समझ पा रहे हैं कि उनके साथ ऐसी स्थिति How है? many people want to get free or liberated from that condition? कितने लोग उस स्थिति से मुक्त होना चाहते हैं और बाहर निकलना चाहते That's हैं? why Prabhupada says hardly anybody is serious about going back to Godhead. इसलिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं बहुत कम ही लोगों को रुचि है वापस भगवत धाम जाने And में। why we're not serious for that is because of this lust. और क्यों हम इसके लिए गंभीर नहीं है इस काम की वजह And से। this is very, very deep-rooted problem. और ये बहुत गंभीर समस्या है। Only for that are we stuck here entangled in the material world. सिर्फ इसी की वजह से इस भौतिक जगत में हम फंसे हुए हैं और बंधन So हैं। without getting caught and getting freed from this attraction and attachment to lust, there's no way for that soul to get liberated from this material tabernacle. तो अगर इस भौतिक काम से प्रति आसक्ति और आकर्षण अगर काटा नहीं जाएगा, तब तक इस भौतिक प्रकृति से बाहर नहीं निकला जा सकता। Therefore, Prabhupada says the human form of life is a chance for the living entity to escape this entanglement of the material existence. श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इस मनुष्य जीवन आपको मिला है, आपको एक पास एक मौका है कि कैसे आप इस भौतिक बंधन से बाहर निकल सकते This is the point of the human form of life. हैं। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। Not to just engage in activities of the animals. जैसे पशुओं की तरह काम में लगे The नहीं हैं। animals are also forced by their nature. पशु भी स्वभाव की वजह से बाध्य होते हैं काम करने But के the लिए। human being has an opportunity to purify and elevate their intelligence and consciousness लेकिन मनुष्य के पास मौका है कि वो अपनी चेतना को, अपनी बुद्धि को शुद्ध कर सकता है और उन्नत बना सकता है, in order to escape this entanglement of sinful activity and sinful reaction. ताकि इस पाप कर्म के प्रतिक्रियाओं से बाहर निकल सके In this samsara, the cycle of birth and death. और ये जन्म मृत्यु के चक्र से, संसार से बाहर निकल सके। So in this human form of life, one can conquer this enemy of lust तो इस मनुष्य जीवन में ही कोई अपने शत्रु काम से जीत सकता है by serious cultivation of Krishna consciousness और अगर कोई गंभीरता से कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे under able guidance of bona fide spiritual master. और योग्य मार्गदर्शन प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के। If we're not serious, लेकिन अगर हम गंभीर नहीं है there's no way out of that. तो कोई भी तरीका नहीं है बाहर निकल पाने का। Then enjoy. और फिर आप मजे कीजिए। This is for those who want to get out of that situation. ये उन लोगों के लिए है जो इस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं। That's why it says that this greatest enemy of lust is everyone dealing with this uncontrolled mind and senses. इसे कहते हैं सबसे बड़ी समस्या ये जो काम है जिसकी वजह से मन और इंद्रिय अनियंत्रित हैं। Krishna continues that the wise living entity's pure consciousness is covered by this eternal enemy in the form of lust. तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जीवात्मा ढका हुआ है इस नित्य शत्रु काम से। So the soul is Satchit Ananda, तो आत्मा सच्चित और आनंद है, blissful, आनंद full है of pure consciousness, और पूरी तरह से शुद्ध चेतना से eternal. नित्य है। That is being covered by different layers of this lust. तो वो ढका हुआ है इस काम के अलग-अलग And that lust, you can never satisfy that lust. और इस काम को कभी आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। It burns like a fire. ये अग्नि की तरह जलता रहता है। So it's like putting gasoline on the fire to try to put it out. जैसे आप आग में ईंधन डाल रहे हैं उसको बुझाने के लिए। Temporarily looks like it worked. तो थोड़े समय के लिए ऐसा लगेगा कि But शायद आग now बुझ it गई, comes back even bigger fire you have created now. लेकिन आग और भी तेजी से भड़कने लगेगी और आपने और भी बड़ी आग लगा ली अपने। So Srila Prabhupada says in the Manu Smriti, it explains that this lust cannot be satisfied by any amount of sense enjoyment. और श्रील प्रभुपाद बताते हैं मनुस्मृति में बताया गया है कि काम को किसी भी तरह की भौतिक इंद्रिय तृप्ति से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। It can never be satisfied. It's never enough.
कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता, कभी पर्याप्त नहीं होता। Just as fire is never extinguished by constantly supplying fuel to it. जैसे अग्नि को कभी भी शांत नहीं किया जा सकता उसमें बार-बार ईंधन डालकर। In the material world, the center of all activities is sex life. और बताया जाता है भौतिक जगत में किसी भी कार्य का मुख्य केंद्र बिंदु होता है यौन संबंध। Prabhupada would say many times, all these trucks and all these people moving and trains and planes, everything is going on for the principle of sex life. तो श्री प्रभुपाद बताते हैं सब कुछ जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, ट्रेन, प्लेन, ये सब कुछ जो कुछ भी चल रहा है, सबका मुख्य केंद्र बिंदु है यौन संबंध बनाना। And thus this material world is called Maitunya Agara, or the shackles of sex life. और इसीलिए इस भौतिक जगत को कहा जाता है मैथुन आग्रह, मतलब यौन संबंध के बंधन में बंधे रहते हैं। In the ordinary prison house, the criminals are kept within the bars. तो सामान्य तरीके से कैदियों को जेल के अंदर रखा जाता है। Or they have this shackles on या हथकड़ी डाली जाती है behind the bars. और उनको जेल के पीछे रखा जाता है। So similarly, criminals who are disobedient to the laws of the Lord, उसी तरह से जो व्यक्ति भगवान के नियमों का अवहेलना करते हैं, they are also imprisoned, उनको भी कैदी बनाकर रखा जाता है and they are shackled. और उनको हथकड़ी पहनाई जाती है। How? कैसे? By sex life. इस यौन संबंध से। Prabhupada said, if you want to see how much you're advancing in your spiritual life, see how much you're getting free from this attraction and attachment to sex. तो बात बताते हैं अगर आपको पता करना है आप कितना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं, आप देखिए आपकी आसक्ति और आकर्षण यौन संबंध के प्रति कितना कम हो रहा है। How much are you thinking about it? कितना आप उसके बारे में विचार कर रहे हैं, How much are we attached to it? कितना हम उससे आसक्त हैं। Then we can understand why we're not advancing in spiritual life. और तब हम समझ सकते हैं क्यों हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर Because we're रहे हैं। still shackled by these desires and attachments for sex life. क्योंकि अभी भी हम बंधन में हैं इस आकर्षण और आसक्ति से यौन संबंध के। Which is the greatest enemy of the living entity. जीवात्मा का सबसे बड़ा And शत्रु is है। what keeps us entangled here in the material world in the cycle of birth and death. Only for that. और इसी वजह से हम इस भौतिक बंधन में हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं। सिर्फ यही एक कारण है। Advancement of material civilization on the basis of sense gratification means increasing the duration of the material existence of the living entity. So as long as we're trying to advance ourselves in this material sense gratification means we're just increasing how much time we have to have this material experience. तो जितना ज़्यादा हम इंद्रिय तृप्ति की सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास करेंगे आधुनिक सभ्यता के विकास के नाम पे, उतना ही ज़्यादा हम अपना यहाँ रहना और समय अवधि बढ़ाएंगे भौतिक जगत। Therefore, this lust is the symbol of ignorance, इसीलिए ये काम अज्ञान का संकेत है, by which the living entity is kept and forced to stay within the material world. इसके माध्यम से जीवात्मा को यहाँ रखा जाता है और मजबूर रहना पड़ता है इस भौतिक जगत में रहने के लिए। And while one enjoys sense gratification, और जब कोई इंद्रिय तृप्ति करता है, it may be that there is some feeling of temporary happiness, तो अनित्य सुख मिल पाएगा, but actually that so-called feeling of happiness लेकिन वो नाम मात्र का सुख का अनुभव is the ultimate enemy of the sense enjoyment. वो सबसे बड़ा शत्रु है उस इंद्रिय तृप्ति के कारण। So whatever we're considering to be happiness and sense gratification, that is ultimately the source of our future suffering condition. तो जिसको हम अपने सुख और इंद्रिय तृप्ति का कारण मान रहे हैं, वही हमारे भविष्य में सारे दुखों का कारण बनेगा। So all of our suffering condition is just for that, तो हमारे जितने भी दुख हैं, वो सबका कारण वही है, just because of lust, इस काम की वजह the से। greatest enemy of the living entity. जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। If you don't have that desire, interest or attachment, you don't belong in the material world. अगर आपके अंदर वो इच्छा, वो रुचि, वो आसक्ति नहीं है, तो आप इस भौतिक जगत And के as नहीं long हैं। as we don't get freed from that, और जब तक हम उससे मुक्त नहीं हो by the जाते, mercy of Krishna, mercy of Sadhu Guru Vaishnava, कृष्ण की कृपा से साधु गुरु वैष्णव की by कृपा से serious and sincere execution of devotional service, और गंभीर एकनिष्ठ भक्तिमय सेवा करते हैं, then we will remain shackled तो हम बंधन में रहेंगे
and forced to commit sinful activity and suffer the sinful reactions. मजबूर होंगे पाप कर्म करने के लिए और पाप कर्म के फलों को भोगने के लिए। There's no way out of it. कोई तरीका नहीं है इससे बाहर आने का। Krishna says, unless you surrender to me, कृष्ण कहते हैं अब तक अगर आप मुझे शरणागत Krishna's नहीं करें। name is Rishikesh, he's master of mind and senses. कृष्ण का नाम है ऋषिकेश, मन और इंद्रिय के स्वामी। So without surrendering to Rishikesh, to Krishna, there's no way to purify or control the mind and the senses. तो बिना ऋषिकेश को शरणागत किए बिना कोई तरीका नहीं है मन और इंद्रिय को These नियंत्रित thoughts, करने these desires, these attachments will never leave you. का। ये विचार, ये इच्छाएं, ये आसक्तियां कभी आपको नहीं छोड़ेंगे। Because only Krishna can free you from that. क्योंकि कृष्ण ही आपको उससे मुक्त कर पाएंगे। But without surrendering to Krishna, then Krishna said, you cannot get out of this mama maya. लेकिन कृष्ण कहते हैं मुझको शरणागत किए बिना तुम इस मम माया से बाहर नहीं निकल Then you पाओगे। have to suffer. तो आपको दुख भोगना ही पड़ेगा। So who wants to get out of that suffering condition? तो कौन उस दुख स्थिति से बाहर निकलना चाहता We है? think, oh, I'm fine. हम सोचते हैं It's ठीक not है, so bad. इतना I बुरा can नहीं handle है, it. मैं झेल सकता हूँ इतना, Right? I'm happy. मैं सुखी हूँ। There's so much ignorance, so much callousness is there. इतना अज्ञान है, इतना जड़ We're बुद्धि है। shackled in the prison house, forced to suffer. We don't even realize it. हम कारागार में बंद हैं और हमें दुख भोगने के लिए मजबूर That's होना why it पड़ता है। says in the Kali Yuga, it's the most degraded, sinful age. इसलिए कलयुग को कहा जाता है सबसे ज्यादा पतित और पापमय युग। Because of so much sinful activities, people have lost their intelligence. इतने सारे पाप कर्म कर चुके हैं कि जीवात्मा अपनी बुद्धि को They don't have any good intelligence. कोई अच्छी बुद्धि बाकी नहीं है। Therefore, they're always in trouble. इसलिए हमेशा समस्या में Don't know रहते हैं। what to do, what not to do. पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना। Just suffering, beginning, middle, and end. शुरू बीच और अंत तक दुख में रहते हैं। Because of this lust. इस काम की वजह से, Because of this heart disease. This is the root of the problem. इस हृदय रोग की वजह से ये सारी समस्या का जड़ है। So how many of us are trying to overcome that? तो कितने लोग हम इससे बाहर निकलने का प्रयास कर Are रहे we हैं? praying how to cut this and get free from this, or we say, no, I want a wife, I need a husband, I need to enjoy some gratification? क्या हम इसको काट के इससे मुक्त होने का प्रयास प्रयास कर रहे हैं, या फिर हम कह रहे हैं मुझे पत्नी चाहिए, मुझे पति चाहिए ताकि मैं इंद्रिय भोग कर सकूं? It's madness. ये सब पागल Foolishness. ये मूर्खता It's है। a little bit of pleasure, unlimited suffering. थोड़ा सा सुख है और असीमित दुख है। And whatever little pleasure you think you're enjoying today, that will be the cause of your future suffering condition. और जो भी थोड़ा आप सुख सोच रहे हैं आपको मिल पाएगा, वही आपके भविष्य में दुखों का कारण That is है। why we're suffering. और इसीलिए हम दुख में हैं। So I'm not suffering. I'm कह रहे alright. हैं, हम तो दुख में नहीं हैं, हम ठीक हैं, मैं ठीक I'm हूँ, relatively alright. I'm happy. मैं ठीक हूँ, ठीक ठाक That's a Maya. सुखी हूँ। ये है माया। That is because of this lust. We want to make excuse for that. ये इसके काम की वजह से हम उस काम के लिए बहाना मारना चाहते हैं। Because too much attracted and attached. क्योंकि बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं हम आसक्त हैं काम से। Prabhupada said this lust is the symbol of ignorance. तो बात बताते हैं ये काम अज्ञान का संकेत है। So in Tamagun and Rajagun, all caught up in the shackles of sex life, and we're thinking we're very bright, very intelligent, very transcendental personality. तो हम अज्ञान में हैं, काम से प्रभावित हैं और बंधन में बंधे हुए हैं और हम रजोगुण तमोगुण में हम सोच रहे हैं बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत चतुर हैं। This is Tamagun. ये सब तमोगुण। I mean, it's covered with so much lust, यानी कि ढके हुए हैं बहुत सारे काम से and we don't even realize और it. हम इसका अनुभव ही नहीं कर पा We're रहे all philosophers. और हम बड़े सिद्धांतिक बन रहे हैं। Everyone's a philosopher. सभी बड़े सिद्धांतवादी बन रहे हैं। So then, Krishna says, और फिर कृष्ण बताते हैं, do you like this discussion? आपको ये Do चर्चा you think पसंद it's आ an रही? important discussion? आपको लगता है ये महत्वपूर्ण Do you think चर्चा this है? is some problem we should consider? क्या आपको लगता है ये कोई समस्या है जो हमें विचार The करने की जरूरत है? all-devouring sinful enemy of man, मनुष्य का विनाश करने वाला सबसे बड़ा the शत्रु, greatest threat and enemy of the living entity, सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा शत्रु जीवात्मा the का। very reason that we are forced to stay and suffer here in the material world. वही कारण जो हमें भौतिक जगत में बनाए रख रहा है और दुख का कारण बन रहा है। Do you think it's an important topic? आपको लगता है ये महत्वपूर्ण विषय Were है? you thinking about this all day long? क्या आप पूरे दिन इसके बारे में विचार कर पा रहे थे? No. नहीं। Then Krishna says, तब कृष्ण बताते हैं, Indriyani manobudhya asyadishtanam uchate eta vimohayate esha jnanam avritya dehinam. Translation. अनुवाद।
I just thought that if you just read one verse, we might as well just tackle the whole thing, isn't it? मुझे ऐसा लगा था हम एक श्लोक पढ़ेंगे तो हम सारी चीजों से निपट लेंगे। Then you see it like in like a full context. और फिर अब जब आगे पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है वो और भी आगे चीजें हैं। That we can actually try to understand what are we up against. तो हम थोड़ा समझ पा रहे हैं कि हम किसके खिलाफ खड़े हैं यहाँ पे। Now Krishna is explaining that your senses, तो कृष्ण बता रहे हैं आपकी इंद्रियां, and your mind, आपका मन, and your intelligence, आपकी बुद्धि, that is the sitting place of this lust. ये काम के बैठने का स्थान है। Remember, many times we're saying that the Maya is sitting. What is the sitting place of Maya? आपको याद है कई बार हमने बात की थी माया के बैठने का स्थान क्या Intelligence, है? mind, and senses. बुद्धि, मन और इंद्रिय। So are we realizing that our intelligence, mind, and senses is completely controlled by Maya, by lust? तो क्या हम अनुभव कर पा रहे हैं हमारा इंद्रिय, मन, बुद्धि माया के नियंत्रण में है, काम के नियंत्रण में है? So that everything we think, तो जो भी हम विचार कर रहे हैं, everything we calculate, जो भी हम गणना कर रहे every हैं, plan we make, जितनी भी हम योजना बना रहे all हैं, the activities that we take, जितने भी हम काम कर रहे is हैं, just for Maya. ये सब माया की Just वजह से, because of lust. इस काम की वजह से। So that means this shows we've become the servant of Maya, ये दिखा रहा है कि हम माया के दास बने the हुए हैं, servant of uncontrolled mind and senses, अनियंत्रित मन इंद्रिय के दास हैं, instead of servant of Krishna. कृष्णा के दास होने की बजाय We're serving in Maya's family, not Krishna's family. तो हम माया के संसार में सेवा कर रहे हैं, We're कृष्णा के attached to the संसार में body and bodily relations. आसक्त हैं शरीर और शरीर के स्तर के And संबंधों that से, ignorance is because of this sinful desire, this lust. और ये अज्ञान है इस पाप कर्म की इच्छा, इस काम This की वजह से। is the heart disease. ये हमारे हृदय का रोग है। So Krishna says your senses and your mind and your intelligence, कृष्ण बताते हैं आपकी इंद्रिय, आपकी मन, आपका बुद्धि, that is the sitting places of this lust. ये इस काम के बैठने का स्थान है। Why don't you just get some tape or something and just like make it so it's not loud, and then she can just close it, open it and close it without making any noise. तो किसी तरह का टेप क्यों नहीं लगा देते कि जब भी आप उसको बंद करेंगे या खोलेंगे तो फिर वो Because she आवाज looks like she wants to keep doing that, right? So just make it so you don't hear anything. तो ऐसे परिस्थिति बनाइए कि वो दोबारा आवाज न करे, Then she'll be happy तो वो सुखी and रहेंगे we'll be happy. और हम भी सुखी रहेंगे, Duh. लेकिन बुद्धि नहीं। So this is sitting place of Maya, of lust. तो ये माया के बैठने का स्थान है काम। Do you know that Maya has taken over your intelligence, mind and senses? क्या आप जानते थे कि माया ने आपके इंद्रिय, मन और बुद्धि को Where do you नियंत्रण think में all रखा of है? these desires and thoughts and plans are coming from? हमें तो समझ में नहीं आ रहा ये इच्छा, ये विचार, ये योजना कहाँ से आ रही It's है? coming from Maya because of this lust. ये माया से आ रही है, इस काम की वजह से। Then because of that lust which is covering mind, intelligence and senses, our real knowledge on the platform of the soul is covered over. तो इसीलिए इस काम की वजह से हमारे इंद्रिय, मन और बुद्धि नियंत्रण में है, तो आत्मा का असल ज्ञान ढका हुआ है। So we lose this idea of Sat Chit Ananda. तो ये विचार सत, चित और आनंद का ढका हुआ है। Wow, he's like a young boy now jumping around over there. अब ये जवान व्यक्ति हो गए, इधर-उधर कूद रहे हैं। He's getting younger by the day. हर दिन ये जवान होते जा रहे हैं। So that pure, real, spiritual intelligence is covered over because of this lust. तो ये वो शुद्ध आध्यात्मिक बुद्धि ढकी हुई है उस काम की वजह से। Then we become really dull, तो हम फिर असल में बहुत really कमजोर stupid. बुद्धि, बेवकूफ बन We जाते हैं। become like cavemen. हम जो है गुफा वाले आदमी I need a woman. मुझे एक स्त्री चाहिए, I need woman. मुझे एक स्त्री चाहिए, Man. मुझे एक पुरुष चाहिए। It's like a caveman mentality. जैसे एक गुफा में रहने वाला आदमी बोलता है, I need place to live. मुझे एक रहने के लिए जगह I चाहिए, need sex life. मुझे यौन संबंध So बनाना। become like cavemen, तो गुफा में रहने वाले आदि मानव जैसे बन जाते cave ladies. हैं, या आदि महिला जैसे। Sometimes they drag you by the hair. बाल खींच के ले जाना, Caveman, you know, dragging you by the hair. जैसे आदि मानव जो गुफा में रहने वाला आदमी बाल पकड़ के खींचते, मुझे तुमसे बहुत प्रेम है।
So then our real intelligence is gone, is covered over, हमारी असल बुद्धि चली जाती है और ढक जाती है and we become really dull, और आप बहुत कमजोर बुद्धि वाले हो जाते हैं really foolish, और बहुत बेवकूफ हो जाते हैं really stupid. बहुत बड़े बेवकूफ हो जाते हैं That's because of false ego. ये मिथ्या अहंकार की वजह से Then what happens? Krishna says, then you become completely bewildered और फिर बताते हैं कृष्णा कि आप पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं because you've lost your good sense. क्योंकि आप अपनी बुद्धि खो देते हैं Now you're crazy अब आप पागल हैं because you're thinking you're your body, क्योंकि आप सोच रहे हैं आप ये शरीर you're हैं shackled in the sex life, और आप बंधन में and हैं you're यौन just संबंध running and chasing after that, और आप उसके पीछे भाग रहे हैं which is the source of our suffering condition. जो हमारे सारे दुखों का The कारण है reason why we're suffering, और वही कारण है जिसकी वजह से हम दुख and we're हैं thinking, no, I'm enjoying और it. हम सोच रहे हैं हम क्या आनंद भोग रहे हैं This makes me happy. ये मुझे सुखी बनाएगा So what is the happiness where the end result is we become completely angry and disturbed, तो ये कैसा सुख है जिसका अंतिम फल हमें मिल रहा है पूरी तरह से क्रोध में है और and परेशान dissatisfied, असंतुष्ट है completely, crazy और पूरी तरह से पागल हो चुके हैं for a couple moments of pleasure? थोड़े से क्षणिक सुख के लिए This is the price that we're paying. ये हमें मूल्य यहाँ चुकाना I पड़ेगा say, no, it's fine. और हम कह रहे नहीं ये ठीक है That's a good plan. ये अच्छी योजना है I want to be happy. मैं सुखी होना चाहता हूँ And Prabhupada said, don't think that because you're old man, it's like this desire is gone. और प्रभात कहते हैं ऐसा मत समझिए कि आप बूढ़े आदमी हो चुके हैं तो ये इच्छा आपके अंदर Or से चली old जाएगी lady. या बूढ़ी महिला हो चुकी है If you don't get this rooted out, that's going to be with you till the day you leave your body. अगर इसको जड़ से खत्म नहीं करेंगे तो शरीर छोड़ने तक में ये आपके अंदर बना रहेगा And that desire will carry you again into another material body. और वो इच्छा आपको और एक भौतिक शरीर में जाने को मजबूर करेगा So when Prabhupada says hardly anybody wants to go back to तो Godhead, वह बताते हैं मुश्किल से किसी को इच्छा है भगवत धाम वापस it's जाने because their desire and attachment to sex life is more important to them. क्योंकि उनकी इच्छा आसक्ति यौन संबंध बनाने की उनको ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके लिए And then externally, superficially, you're saying, oh, we're devotees, of course we want to go back to Godhead. और बाहर से हम दिखावा कर रहे हैं कि हम भक्त हैं और हम अवश्य भगवत धाम जाना चाहते हैं But as long as we are not seriously trying to uproot this, लेकिन जब तक गंभीरता से हम इसको जड़ से the खत्म नहीं करना चाहते all-devouring sinful enemy of man, तो मनुष्य का विनाश करने वाला सबसे बड़ा शत्रु by serious hearing and chanting and devotional activity, और गंभीर श्रवण और कीर्तन भक्ति में सेवा करते हैं with the idea of how to purify our heart and consciousness, इस विचार को रखते हुए कि कैसे मैं अपनी हृदय चेतना को शुद्ध करता that's हूँ the activity of the devotee. वो भक्त का काम है भक्त They're का just कर्तव्य। externally saying, yes, we're devotees, we want to go back to Godhead. और बाहर से हम कहते हैं हम भक्त हैं हम भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं This is not real. वो असली नहीं है It's sentimental. ये भावुकता है बस When we're working on this seriously every day, trying to overcome this, तो अब गंभीरता से हम हर दिन इसके ऊपर काम कर रहे हैं इससे बाहर trying to निकलने का get प्रयास this कर रहे हैं out of our thoughts and mind, हमारे विचारों हमारे मन से इसको बाहर निकालने का it प्रयास कर says रहे if हैं you do very serious bhakti, devotional service on the guidance of Guru Krishna, all of these thoughts and desires will leave you. ऐसा कहते हैं अगर आप गंभीरता से प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति का अभ्यास करें तो ये सारी इच्छाएं आपसे छोड़कर चली जाएंगी Prabhupada says it's like the serpent, if you just like knock out its teeth. प्रभुपाद उदाहरण देते हैं जैसे सांप है सांप के अपने दांत तोड़ दिए So if you knock out the teeth, it may move, but it's not going to kill you. तो अगर आपने सांप के दांत तोड़ दिए तो सांप चल फिर सकता है लेकिन आपको मार नहीं पाएगा And eventually, it says that even in your dreams, you will not think about these things. और कहते हैं कि अंत में सपने में भी आपके पास काम की इच्छाएं नहीं है So gradually, by serious, commitment, determination in devotional service, the one automatically gets purified and detached from all things material. तो जैसे धीरे धीरे आप भक्ति में सेवा में लगेंगे दृढ़ निश्चय के साथ तो धीरे धीरे अपने आप इनसे इच्छाओं के प्रति आसक्ति आपकी कम होती जाएगी और इच्छाएं खत्म होती जाएंगी That's why Prabhupada said that the process of Krishna consciousness, a process of purification. इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बताया है कृष्ण भावना में की प्रक्रिया शुद्धिकरण की प्रक्रिया है So it says that this lust has to be transformed into love. तो कहते हैं इस काम को प्रेम में परिवर्तित करना होगा Right? That if we're serving in Krishna's family, serving Krishna's devotees, then the love and affection can be spiritualized. तो अगर हम कृष्णा के भक्त के परिवार में सेवा कर रहे हैं तो हमारा काम आध्यात्मिक रूप में परिवर्तित हो सकता है That's the idea. ये So Prabhupada says the enemy, Maya,
Lust has captured different strategic positions within the body of the conditioned soul. प्रभुपाद बताते हैं माया काम शत्रु ने जीवात्मा के शरीर में 3 जगह अपना स्थान लिया हुआ है। Well, I was thinking, मैं सोच रहा that था, was me. वो मैं था। Now I have a desire. मेरे अंदर ये इच्छा है। Now I need a plan. अब मेरे पास एक योजना भी है। Now I need to execute the plan. मुझे उस योजना को पूरा करने की Where did all जरूरत that come है। from? ये सब आया कहाँ से रहा है? Where did those thoughts and desires and plans come from? ये सारी इच्छाएं, ये विचार, ये योजना कहाँ से रही है? Maya. माया से। Because of lust. इस काम की वजह से। Because all the thoughts, desires, and plans is based on lust and sense gratification. ये सारे विचार योजना आधारित है काम और इंद्रिय तृप्ति के ऊपर। That's why it says in Bhagavatam, this attachment to the body and bodily relation is the root cause of every other sinful activity that you will perform. इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया गया है शरीर और शरीर के संबंधों से आसक्ति आपके सारे पाप कर्मों का जड़ कारण है। So if we don't solve that one, then it's just unlimited sinful desires and sinful activity, and you'll be forced, even you know it's not good, you'll still be forced to do it. तो अगर हम इन आसक्तियों को बनाए हुए हैं तो हमें पाप कर्म में लगने के लिए बाध्य न हो। आप जानते हो ये पाप कर्म है, आपके लिए दुख भोगना पड़ेगा इसको पूरा करके, फिर भी आप बाध्य होंगे उसको करने के लिए। Because Maya, the enemy, the lust, has strategically captured intelligence, mind, and senses. क्योंकि माया और शत्रु ने काम ने मन बुद्धि इंद्रियों को पकड़ कर रखा है। So now you have so much confidence in whatever you're thinking and desiring and plan making, you think it's all transcendental coming from Krishna. तो आपको विश्वास है कि आप जो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, वो दिव्य स्तर पे आ रही है? So because you thought it up, that means it's coming from Krishna. ये आपने बस सोच लिया तो ये बस कृष्णा से आ रहा होगा। So Prabhupada said, Lord Krishna is giving hints of those places. तो प्रभुपाद बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण आपको संकेत दे रहे हैं उन जगहों का जहाँ माया का स्थान है। So that one who wants to conquer the enemy may know where that enemy can be found. तो अगर किसी को शत्रु को विजय करना है तो पहले पता करना होगा वो शत्रु को आप कहाँ खोज सकते हैं। But we in our ignorance we think, no, I am my intelligence, mind and senses. लेकिन अपने अज्ञान में हम ये सोचते हैं कि मैं हूँ मेरी बुद्धि, मन और इंद्रिय। This is how dull we are and how much we've lost our spiritual good sense. ये हमारी बुद्धि कमजोर हो चुकी है और हमने आध्यात्मिक समझ खो दी है। The mind is the center of all the activities of the senses. मन सारे इंद्रियों का गतिविधि का केंद्र बिंदु है। And thus when we hear about sense objects, the mind generally becomes a reservoir of all ideas. तो जैसे ही हम किसी इंद्रिय विषय के बारे में सुनते हैं तो मन में सारे उसको भोग करने की इच्छाओं के विषय से भर जाता है। So as the senses are demanding, तो जैसे इंद्रिय कुछ ना कुछ then the मांगता है, mind is saying, okay, how do I fulfill all of the demands of my senses? तो मन विचार करता है कैसे मैं इंद्रियों की सारी इच्छाओं को पूरा करूँगा। So the mind has generally become a reservoir of all of the ideas तो मन एक भंडार बन जाता है सारे विचारों का, how to fulfill the demands of our senses for sense कि gratification. इंद्रिय के मांगों को कैसे पूरा किया जाएगा ताकि इंद्रिय भोग किया जा सके। And as a result, the mind and the senses have become repositories. It has received all of the lust into this mind and senses. और इसकी वजह से ही मन और इंद्रिय में सारे काम की इच्छाएं भर गई। And then sitting right next to the mind is our intelligence. और मन के सबसे ज्यादा नजदीक है हमारी बुद्धि। The intelligence department, Prabhupada calls it. बात कहते हैं बुद्धि का विभाग। The intelligence department becomes the capital of such lustful propensities. और बुद्धि का विभाग जो है हमारा उन सारे काम की इच्छाओं की राजधानी बन जाता है। So now you've collected everything, it's all the ideas are in the mind, and then now your intelligence is the capital there. तो आपने वो सारी इच्छाओं योजनाओं को एकत्र किया एक जगह पे अपने मन में और बुद्धि जो है उसकी राजधानी बनी। So this intelligence is the immediate next door neighbor of the spirit soul. तो और ये बुद्धि जीवात्मा का सबसे करीबी पड़ोसी है। So you have the spirit soul, then you have intelligence, then you have the mind, then you have senses. तो सबसे पहले आत्मा, उसके सबसे नजदीक है बुद्धि, उसके बाद मन और इंद्रियां। So if your intelligence becomes lusty,
तो अगर आपकी बुद्धि काम से प्रभावित है, due to this asat sanga, इस असत संग की वजह से, then this will influence your spirit soul to acquire a false ego. तो ये आपकी आत्मा को प्रभावित करेगा एक मिथ्या अहंकार पाने के लिए। It's like sometimes some important man, they want to do some nonsense, they put on some disguise. जैसे कोई अच्छे व्यक्ति कोई बुरा काम करना चाहते हैं तो वो किसी तरह का वेश बदल कर आते हैं, Because they don't want to be seen in the public, right? क्योंकि लोगों के बीच में वो दिखना नहीं चाहते So हैं। they बुरे put काम on some clever disguise so you can go commit your sinful activities. तो चतुराई से वो थोड़ा वेश बदल कर जाते हैं ताकि वो पाप कर्म कर सकें। So when we want to do some nonsense, then we need a false ego. तो अगर हम कुछ बकवास करना चाहते हैं तो हमें कुछ मिथ्या अहंकार चाहिए And we want to forget that we're servant of Krishna. और हम भूलना चाहते हैं कि हम कृष्ण के Because दास हैं, now we want to engage in sinful activity. कि अब हमें पाप कर्म में लगना है। And then the spirit soul becomes addicted और फिर जीवात्मा को बुरी आदत to लग जाती है enjoying all of this material sense gratification, इस तरह के सारे भौतिक इंद्रिय को भोग करने की, because we are under the impression, we're making this mistake that this will actually make us happy. क्योंकि हम प्रभावित हैं इस विचार से कि ये हमें असल में सुखी बनाएगा, This will bring us true happiness. ये हमें असल सुख दे पाएगा। That's why Prabhupada says, everybody wants to be happy. इसलिए श्री प्रभुपाद बताते हैं सभी सुखी होना चाहते हैं, Nobody can deny that. कोई इसको अस्वीकार नहीं कर रहा। But Prabhupada said, because of your ignorance, श्री प्रभुपाद बताते हैं अपने अज्ञान की you वजह से don't know how to be happy. आपको पता नहीं है सुखी कैसे You होना है। think you can be happy not surrendering and serving आप Krishna. सोचते हैं आप सुखी हो सकते हैं कृष्णा को शरणागत उनकी सेवा ना किए You बिना। think you can be happy by forgetting and ignoring Krishna आप सोचते हैं आप सुखी हो सकते हैं कृष्णा को भूल के उनको अनदेखा and just करके engaging in the sinful activities. और पाप कर्म करने में लग गए, And you're thinking that's going to make you happy. और आप सोच रहे हैं वो आपको सुखी बनाएगा, That's why we keep doing it. और इसीलिए हम उसको करते भी रहते हैं। But what is the reality? लेकिन सच्चाई क्या है? Sometimes they call it like love-hate relationship. कभी-कभी लोग कहते हैं प्रेम और नफरत वाला So संबंध। the very same thing you think you're loving, you're even more hating it. तो जो चीज से आप प्रेम करते हैं बहुत उससे सबसे ज्यादा नफरत भी करने लगते हैं, Because it's actually the cause of why you're suffering. क्योंकि असल में वही आपके दुख का कारण बनता है जिसकी वजह से आप सारे दुखों कष्टों में हैं। So this is very deep-rooted program. ये बहुत ही गंभीर समस्या है, That's why we're not being attracted to Krishna और consciousness. इसीलिए हम कृष्ण भावना के प्रति आकर्षित नहीं Because होते, our consciousness is so covered over with this lust. क्योंकि हमारी चेतना इतनी ढकी हुई है इस काम की वजह And से, we're in such a spiritually diseased condition. और हम ऐसे आध्यात्मिक बीमार स्थिति में हैं। Rupa Goswami calls it jaundice condition. रूप गोस्वामी इसको पीलिया वाली स्थिति कहते हैं। So when you have jaundice, then anything that is sweet, it tastes bitter. तो कहते हैं जब आपको पीलिया होता है तो जो मीठी चीज आपको कड़वी लगती है। So although Krishna consciousness is so sweet, we should be so attracted to us in the jaundice condition, it's feeling bitter. तो यद्यपि कृष्ण भावना में बहुत मीठी है, लेकिन हमारे जो We said, no, पीलिया this is स्थिति में higher कड़वा है। taste. But in diseased consciousness, we think, no, it's bitter, it's unpalatable. तो ये सबसे ऊंचा स्वाद है, लेकिन हमारी बीमारी स्थिति में कहते हैं ये कड़वा है या बेस्वाद है। I remember I got jaundice one time, मुझे याद है मुझे एक बार पीलिया बीमारी हुई, so that was very good for me, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था वो, because then I could really understand what is jaundice. क्योंकि तब मुझे असल में समझ में आया कि पीलिया क्या होता है। And one day we're drinking a sugar cane juice, और फिर मुझे गन्ने का जूस पिलाया जा रहा था and it tastes so bitter. और बहुत ही कड़वा लग रहा था। And I was thinking, how is this like that? फिर मैं सोच रहा था ये मुझे कड़वा क्यों लग रहा है। Usually it's very nice, very sweet, right? सामान्य Very जब enjoyable. अच्छा होता है, मीठा होता है, मजा आता है। Then I saw, oh, my eyes are turning like yellow, my skin color changing, right? तब मैंने And I देखा said, oh, कि मेरी आंखें जो है पीली हो रही है, मेरे चमड़े का रंग बदल रहा है, तब मैं समझ पाया अच्छा। and someone said, yeah, you have jaundice. और किसी ने मुझे कहा कि तुम्हें पीलिया हो गया है, So then they took me to the doctor in Bhubaneswar. और फिर मुझे वो डॉक्टर के पास भुवनेश्वर में ले They गए। said, yep, you have jaundice. मैंने कहा हाँ आपको पीलिया हो गया है, So what's the cure? तो इसका इलाज You क्या have है? to drink so much sugarcane juice. मैंने कहा आपको बहुत सारा गन्ने का जूस पीना So I होगा। was like, great. मैंने कहा बहुत अच्छा, I love sugarcane मुझे juice. तो गन्ने का जूस बहुत पसंद है। Right?
right? And then you start drinking the sugarcane juice, and it's like it's so bitter, you know. और फिर जब गन्ने का जूस पीना शुरू करते हैं इतना कड़वा लगता है। Then you take a few sips, and it's like फिर थोड़ा कुछ हम लेते हैं और फिर हम कहते हैं And then नहीं। they're telling you take like more liters of it. और फिर वो कहते हैं लीटर भर के लेना है। By the end, I don't want to see sugarcane juice like ever again. और अंत में मैं ऐसा सोचने लगा था कि मैं पूरे जीवन में गन्ने का जूस देखना नहीं चाहता। It took me a while to overcome that. और मुझे थोड़ा समय लगा उससे भी बाहर निकलने Now it's nice. अब मुझे अच्छा लगता है। But at the time, it was like I've had it with the sugarcane juice. लेकिन उस समय तक मैं गन्ने के जूस से उब चुका था। But that's what you have to do to get all the disease out of you. लेकिन ये आपको करना पड़ेगा इस बीमारी को अपने So शरीर से बाहर Krishna is निकालने। trying to attract us. तो कृष्ण प्रयास कर रहे हैं हमें आकर्षित He's करने के trying to लिए, purify us and attract us and canvas us. आकर्षित करने का, आश्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। But we're so dull. लेकिन हम इतने कमजोर बुद्धि वाले हैं, बेवकूफ हैं हम, Because we're covered by all of this lust. क्योंकि हम ढके हुए इन सारे काम से। So we cannot hear, we don't understand it, it's not attractive. तो हम सुन नहीं सकते, ना समझ सकते हैं, ना हमें We आकर्षित लग don't रहा है। realize this is in our best हम interest. समझ नहीं पा रहे कि हमारे लिए सबसे अच्छा है। That is the problem with this lust and how deep rooted it is. और ये समस्या है इस काम की और ये इतने गहराई तक है हमारे अंदर। So process of Krishna consciousness is process of purification. तो ये कृष्ण भावना की प्रक्रिया शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। Therefore, these people who think that you can just jump and be a gopi in the mood of separation, इसलिए जो ये लोग जो सोचते हैं वो खुद के गोपी के भाव में आके दूसरा भाव में आएंगे। you get a heart and mind full of lust, and now you're gonna think you're a gopi in the mood of separation. आपका हृदय मन काम से पूरी तरह भरा हुआ है और अब आप सोचेंगे कि मैं गोपी की तरह विरह के भाव में हूँ। You'll become even more lusty. आपके अंदर और ज्यादा काम You'll कर end up जाएगा। committing more sinful आपका activities अंत और पाप कर्म करने में हो जाएगा, because it's not uprooted. क्योंकि अभी तक हृदय से जड़ से खत्म नहीं That's why हुआ। it says the Bhagavatam, you have to start from the first canto. इसलिए कहा गया श्रीमद् भागवतम आपको पहले स्कंद This से is शुरू like करना the चाहिए। feet of the Lord. ये भगवान के चरण है जैसे, And then gradually, as you're going up in the cantos, and you're moving up to the Lord. और जैसे आप धीरे धीरे अगले स्कंद में बढ़ेंगे तो आप भगवान के चेहरे की तरफ Then when you आएंगे। get to the 10th canto, then you're looking directly at Krishna. जब आप दसम स्कंद में पहुंचेंगे तो आप भगवान की तरफ सीधे सीधे देख रहे हैं। So there needs to be this process of purification. इसीलिए ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया जरूरी है। When Srila Bhaktivedanta.Swami Thakur, he used to go to Radhakund. जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राधा And all कुंड of जाया these करते so-called Babajis are sitting there. और ये बहुत सारे नाम मात्र के बाबा जी They're वहाँ all बैठे थे talking about Raganuga Bhakti. और सब रागानुगा भक्ति के बारे में बात कर रहे होते थे। They're all acting like they're manjaris in the mood of separation. वो ऐसा दिखावा करते थे कि वो मंजरी गोपी के भाव में है, विरह के भाव में And है। Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he would chastise these people like anything. और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे लोगों को बहुत You बुरी तरह people, डांटते थे। bunch of आप nonsense, लोग बकवास लोग हैं, bunch of cheaters, bunch of aparadis. ठग हैं, अपराधी हैं आप। And you're posing like you're advanced and collecting money from all of these people, sitting here acting like you're a manjari mood of separation. और आप खुद को उन्नत दिखा के लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप मंजरी के भाव में, He विरह के said, भाव this में। is all rascaldom. वो कहते थे ये सब बदमाशी है, Rascaldom. बदमाशी। Why you're not studying other Dhruva Maharaj and Prahlad Maharaj? Why don't you learn other parts of Bhagavatam first? Try to purify your consciousness. तो पहले आप ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज की लीलाओं को क्यों नहीं पढ़े जो श्रीमद् भागवत में बताया गया? अपनी चेतना को पहले शुद्ध करने का प्रयास कीजिए। Try to get freed from all of this lust. पहले इस सारे काम से शुद्ध करने का प्रयास You have to कीजिए। go to anartha nivritti. आपको अनर्थ निवृत्ति से गुजरने की जरूरत है। But that takes a lot of work, a lot of purification. लेकिन इसके लिए बहुत सारा कार्य, बहुत सारा So शुद्धिकरण की people don't जरूरत like है। it. लोगों को ये पसंद नहीं। So they're accepting everything very easy, very cheaply. सब कुछ बहुत आसान, सस्ते तरीके से लोग चाहते हैं। And then they're just trying to assume the role as gopi in mood of separation. और फिर वो ऐसे भूमिका करना चाहते हैं जैसे वो कोई गोपी है विरह के भाव Trying to sit at Radha Kund. और राधा कुंड में बैठे रहना चाहते And हैं। how long you'll sit there? कितने देर आप बैठेंगे वहाँ? How long do you think that you'll be allowed to sit there? कितनी देर आपको वहाँ बैठने की अनुमति मिलेगी? You can say, I'm going to sit there. आप बोल सकते हैं आप वहाँ जाके बैठे रहेंगे। Let's see how long you'll sit there. देखेंगे कितनी देर आपको वहाँ बैठे रहने दिया जाएगा। You have to be qualified. आपको योग्य बनना होगा।
It says if you disregard the instruction of the 6 Goswamis, you'll be so disturbed and you'll create such a disturbance in the society. कहते हैं अगर आप गोस्वामियों के निर्देश की अवहेलना करेंगे तो आप खुद इतने परेशान होंगे कि आप समाज में लोगों को परेशान कर देंगे. It's like, Radha and Krishna and devotees, they're having nice spiritual parties. जैसे राधा कृष्ण और सारे भक्त एक बहुत अच्छी आध्यात्मिक पार्टी कर रहे हैं. And then we're just like crashing through the kitchen window, और हम जो है रसोई घर के खिड़की को तोड़ते हुए अंदर घुसने का प्रयास कर रहे And हैं. we're like breaking into the back window, I gotta get into this party, खिड़की तोड़ के हम जो है पार्टी में घुसने का प्रयास कर रहे हैं. It's better to be invited and like someone takes you by the hand and brings you in the front door. बेहतर होगा कि अगर आपको निमंत्रण मिले, कोई आपका हाथ पकड़ के आपको सामने के दरवाजे से पार्टी के अंदर बुलाएगा. We're like breaking in the back window, falling over the sink onto the ground. तो हम जो है खिड़की का तोड़ के सिंक के अंदर गिर के जमीन में गिर के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं. It's unauthorized. ये अनधिकारी. It's uninvited. You're an uninvited guest. आप जो है आमंत्रित नहीं किया गया है, बिना They'll आमंत्रण just के call the पहुंच गए. police. Think some crazy guy, broke in my house. और पुलिस को बुला लें, कोई पागल व्यक्ति हमारे घर को तोड़कर घुस गया है, Get him out of here. उसको यहाँ से बाहर निकालिए. So you have to do it in the right way. तो आपको सही तरीके से करना होगा. You don't get just charging in there, breaking in there. आप बस तोड़ के जबरदस्ती ने अंदर नहीं घुस I सकते. want to see what's going on here. मैं देखना चाहता हूँ यहाँ क्या हो रहा है. Who are you? आप हैं कौन? Become qualified first of all. पहले योग्यवान बनिए. Right? That's why it says if you don't get free from all of this lust and sinful desires and sinful attachments, you cannot go back to Krishna Loka. You cannot go back to Vaikuntha. इसलिए कहते हैं अगर आप काम से, पाप कर्म की इच्छाओं से, आसक्तियों से मुक्त नहीं होते हैं तो आप गोलोक, कृष्ण लोक, वैकुंठ लोक नहीं जा सकते. All of that has to be cleared here. इन सारी चीजों को आपको यहीं साफ करने की जरूरत है. Krishna says when you're free from your sin and your sinful desires, sinful reactions, then you can go back home, back to Godhead. कृष्ण कहते हैं अगर आप पाप कर्म की इच्छाओं से मुक्त होंगे तभी आप भगवत धाम वापस जा पाएंगे. Otherwise, it's all filthy, it's all dirty, it's all contaminated. वरना ये सारा गंदा है, दूषित है और कलमशों से भरा है. What service are we going to do? क्या सेवा करेंगे हम? So we have to clean up the act, तो हमें पहले सफाई करने की जरूरत है. And so this is the process. तो ये है प्रक्रिया. We must identify what is the enemy, हमें पता करना होगा शत्रु क्या है, what is our heart disease. हमारे हृदय का रोग क्या है. My Gurudev, I remember he said that if you're intelligent and wise, मेरे गुरुदेव कहा करते थे अगर आप बुद्धिमान और चतुर हैं, really intelligent, असल बुद्धिमानी है, and you're honest, और अगर आप ईमानदार हैं, you'll realize my heart is filthy. आप समझ पाएंगे कि मेरा हृदय बहुत गंदा है, I have this heart disease. मेरा हृदय का रोग है. This is the root of the problem. और ये समस्या का जड़ है. And anyway, anyhow, I have to clean this up. और किसी भी तरीके से कैसे भी मुझे इसको साफ करना है. That's the work of devotee. How do I clean this up? How do I get out of this situation, condition? ये एक भक्त का कार्य है. कैसे मैं इस स्थिति से स्वयं को साफ कर सकता हूँ, इस परिस्थिति को सुधार सकता हूँ. Not how do I pursue it. कैसे मैं इसको, ये नहीं कि कैसे मैं इसको पूरा करूँ. Right? Somebody came today, wanted to meet with me after the class. वो एक व्यक्ति क्लास के अंत में मुझसे मिलना चाहता था. So he's acting like he wants to surrender, accept me as some type of spiritual master. तो ऐसा लग रहा था कि वो मुझे शरणागत करके और मुझे किसी तरह का गुरु अपनाना चाहता है. And then I found myself just saying, okay, be patient. और फिर मैंने कहा कि आप थोड़ा धैर्य रखिए. Just to become confident पहले आप आत्मविश्वास लाइए that you want to surrender to Krishna. कि आप कृष्ण को शरणागत करना चाहते हैं. Convince Krishna. कृष्ण को आश्वस्त कीजिए. Right? And then Krishna will convince me. और कृष्ण मुझे आश्वस्त करेंगे. And then gradually, let's see where we can go. और धीरे-धीरे हम देखेंगे कि हम कितनी दूर पहुंच पाएंगे. So I was just being like very be patient. तो मैं कह रहा था थोड़ा धैर्य Don't rush रखिए. anything. थोड़ी जबरदस्ती मत करिए. Just try to purify yourself. Try to qualify yourself. अपने आप को शुद्ध बनाने का, योग्य बनाने का प्रयास Try कीजिए. to become convinced what you really want. और आश्वस्त होने का प्रयास कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं. Try to convince Krishna in your heart you want to really be devotee. आप कृष्ण को अपने हृदय में आश्वस्त करने का प्रयास कीजिए कि आप असल में Really भक्त बनना चाहते surrender. हैं, असल में शरणागत करना चाहते हैं. This is your work now. ये आपका अभी का काम है.
So I noticed he's not liking my answer. तो मैंने देखा कि उसको मेरा उत्तर पसंद नहीं आ रहा। He's like, ऐसे कर रहे हैं। and I was thinking it's all good information. You know? मैं सोच रहा था ये तो बहुत अच्छी जानकारियाँ हैं। So I'm thinking, why he's not liking that answer? मैं सोच रहा था इनको ये उत्तर पसंद क्यों नहीं आ रहा? Some gurus are like, yes, you be my disciple. कुछ गुरु ऐसे होते हैं, हाँ मेरे शिष्य बन जाओ। Immediately, your name is. आपका ये नाम है। I said, I'm just asking question. I'm not asking for name yet. You know. देखा मैं बस आपको सवाल पूछ रहा हूँ, आपका नाम नहीं पूछ रहा हूँ। You know you're in trouble when they show up with like a fire yagya and some grains, you know. आपको पता चलेगा आप मुसीबत में हैं। Just like pops up like a popped up fire yagya, you know. कि तुरंत आपके सामने जो है अग्नि कुंड लेकर आ जाएंगे और फिर उसमें कुछ चावल के दाने लेकर आ जाएंगे आपका यज्ञ करने। No, do we need some grains? Don't worry, you get this whole bag of grains. हमें थोड़े जो है अनाज अन्न चाहिए। I get bananas too. केला लेके आ जाएंगे और केला डालेंगे अग्नि कुंड में। What is this? Like a traveling circus, you know? ऐसा लग रहा है चलता फिरता सर्कस है। Pop up. Oh, there's the looks like bricks, you know? जैसे जेब से बाहर निकालेंगे ईंटें बाहर आ जाएंगी और अग्नि कुंड बन जाएगा। Just cardboard, you know? It just looks like bricks. You just paint it, you know? वो बस पेंटिंग के बाद दिखाई है लेकिन ऐसे तो ईंटें नहीं। You can even get like something that's like electronic. It looks like a fire, you know? और कोई बिजली की कोई ऐसी चीज खा सकते हैं चमकती जो देखने में आग जैसा लगेगा। Sparks are flying, everything. But you can do all kinds of things in Kali Yuga. You know? ऐसा लगेगा चिंगारियां उड़ रही हैं, इन सब सारी चीज कलयुग में किया जा सकता है। And then they give you a list of like the most popular names, you know? और फिर वो आपको एक लिस्ट देंगे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाम कौन सा है जो आप अपने लिए चुनना चाहते हैं। 2022, these are the most popular disciples' names, you know? तो 2022 में ये सबसे प्रसिद्ध शिष्यों का नाम है। It's all going on. ये सब कुछ चल रहा So है। I'm telling, just be patient. मैंने कहा थोड़ा धैर्य रखिए। Just try to qualify yourself. अपने आप को योग्य बनाने का Try to प्रयास purify कीजिए। yourself. अपने आप को शुद्ध करने का No प्रयास rush is there. कीजिए। कोई अभी भागा दौड़ी नहीं है। If it's meant to be, gradually, everything will happen. अगर ये गुनाह है तो धीरे-धीरे अवश्य होगा। So he's not happy. तो वो सुखी नहीं था। So I was like, why he's not happy? मैं सोच रहा था ये सुखी क्यों नहीं है। Then I said, okay, anyway, that's the best advice I can give you. कोई बात नहीं, यही मेरे पास श्रेष्ठ सलाह है जो मैं आपको दे And सकता he's like, all right. You हूँ। know. कहा ठीक है। And then and I was like, okay, I get to take prashad, you know. मैं कहा चलो मुझे प्रसाद देना है, चलो। And he said, well, I have one more question. फिर कहते हैं मुझे मेरे पास और एक I was प्रश्न like, है। oh no. मैंने कहा और नहीं। And he said, it's like a silly question. फिर कहता है ये बहुत ही कुछ बचकाना सवाल है। I said, what's your silly question? मैंने कहा आपका बचकाना सवाल क्या है? And he starts saying, you know, I need to get married. मैंने कहा कि मुझे शादी करनी है। Ah, you're looking for a wife. ओह अच्छा, आप एक स्त्री ढूंढ रहे हैं, पत्नी ढूंढ रहे हैं। Sure. So I said, you first get Krishna, then worry about the wife. मैंने कहा पहले कृष्णा पाओ, उसके बाद पत्नी के बारे में And he was चिंता like, करना। man, he didn't like that answer either. और उनको वो उत्तर भी पसंद नहीं आया। Then I realized I'm in trouble. This guy not serious. You तो मैं know? समझ में आया, मैं मुसीबत में, ये व्यक्ति गंभीर नहीं है। Then when you go back to the circus and you just pull like some wife out of a bag, you know, here's your wife, you know? फिर क्या आप सर्कस दिखाएंगे क्या? बैग से एक पत्नी बाहर निकाल के देंगे, ये लो एक पत्नी। Yeah, nice. Anyway, I won't go too far there. तो मैं बहुत ज़्यादा उसमें आगे नहीं बढ़ूँगा। I don't want to get in trouble. मैं मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। So you see when I'm posing like he's serious, तो जब देखने में ऐसा लगता है वो गंभीर है। then I'm giving him serious answer, और मैं जब उसको गंभीर उत्तर दे and रहा he's हूँ, not liking तो it. उनको पसंद नहीं आ रहा। And then I told the same thing 3 times, and he's like, oh. और मैंने एक ही उत्तर उनको 3 बार दिया और उन्होंने ऐसा किया। And then I have a silly question. और लास्ट में मेरे पास एक बचकाना सवाल है। And then I said, you probably have to get married, no doubt. मैंने कहा अवश्य, मुझे लगता है आपको शायद Most विवाह people शादी have to करनी get चाहिए। married. That's not a problem. ज़्यादातर लोगों को विवाह करना ही But होता है, first कोई get समस्या नहीं है। Krishna. लेकिन पहले कृष्णा को पाइए। Let Krishna give you shelter, bona fide guru. कृष्णा आपको प्रमाणिक गुरु का आश्रय देंगे। They get trained up, get strong, get the spiritualized. और थोड़ा प्रशिक्षण लीजिए, थोड़ा आध्यात्मिक शक्ति लाइए जीवन में। And then worry about a wife. और तब आप पत्नी के बारे में It's चिंता one step at a time, करें। एक बार में एक कदम लेने की जरूरत है।
Right? Then Krishna make arrangement, then husband and wife accepting the guru, they're serving in Guru and Krishna's family. और फिर कृष्णा व्यवस्था करेंगे कि पति और पत्नी दोनों गुरु के आश्रय में कृष्ण की सेवा करेंगे, कृष्ण परिवार। So if we're not settled in that relationship, serving in Guru and Krishna's family, why are you talking about a wife or a husband? तो अगर आप अभी स्वयं निश्चित नहीं है गुरु कृष्णा के परिवार में उनकी सेवा में निश्चित नहीं है, तो क्यों आप पत्नी के बारे में भी चिंता करें? That may be next stage. वो अगला स्तर है। So you have to do everything, sanely, smartly, one step at a time. तो सब कुछ बुद्धिमानी से, चतुराई से एक बार में एक कदम लेकर आगे बढ़ना। Otherwise, you're introducing all of this thing at the same time. It can become chaos. वरना एक बार में आप सारी चीजों को लेकर आएंगे तो पूरा उथल-पुथल मच जाएगा। So first be fixed with Krishna and fixed with the Guru. तो पहले कृष्णा और गुरु में स्थिर होइए। Have sufficient faith and training. और पर्याप्त श्रद्धा और प्रशिक्षण लीजिए। Be convinced in the instructions that the Guru is giving you, Krishna is giving you through the Guru. और आश्वस्त होइए कृष्णा के उन निर्देशों में जो कृष्णा गुरु के माध्यम से दे रहे हैं। Find out if you're going to dedicate yourself to that seriously. और पता लगाइए कि आप उसको पूर्ण रूप से समर्पण करना चाहते हैं उस Then सेवा को। talk about the marriage. तब आप शादी के बारे में बात कीजिए। Everything has to be in the due course of time. सब कुछ समय के साथ होगा। He's asking questions. You're being tricky. You say, I want to be disciple. I want to surrender. Oh. थोड़ा वो मेरे साथ छल कर रहे थे। पहले बोले थे मैं गंभीर होकर शरणागत करना चाहता हूँ, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। And I'm saying you could probably find some guru who will just be happy. और मैंने कहा आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाएगा जो तुरंत आपसे खुश हो जाएगा। Oh yes, you can be my disciple. I'm your guru. हाँ, आप मेरे शिष्य बनो, मैं आपको गुरु बनूंगा। But I don't want disciple like that. लेकिन मुझे ऐसे शिष्य नहीं चाहिए। Because they become big problem. क्योंकि वो बड़ी समस्या बनते हैं। So I'm not interested. तो मुझे कोई रुचि नहीं। I said, let's see if it's real. मैंने कहा चलिए देखते हैं पहले ये असली है। Let's see if this is really Krishna's arrangement. चलिए देखते हैं असल में कृष्णा ने व्यवस्था की है। Let's see if it's serious. चलिए देखते हैं आप गंभीर हैं। Take one step at a time. Time will tell. एक बार में एक कदम उठाएंगे और समय बताएगा। And then you pass those tests. और फिर जब आप उन परीक्षाओं को पार And करेंगे, whatever you need, automatically by mercy and blessing of Guru Krishna, it will automatically come. और जो भी आपकी जरूरत है गुरु कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद से अपने पास अपने आप आपके पास आ जाए। If that's what's meant for you, अगर वो आपके लिए बना है, why we're rushing it? क्यों हम Why भागा we're trying to control it? या नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं उसको? Otherwise, it's like going fishing. You're just going out with the fishing, trying to catch something, वरना आप मछली पकड़ने जा रहे हैं कि कोई मछली पकड़नी है मुझे। You might pull in a shark हो सकता है आप किसी शार्क को उठा लेंगे or an octopus या फिर किसी ऑक्टोपस को or an alligator. या फिर मगरमच्छ को Or you could pull in a tire. या फिर एक टायर आप उठा लेंगे। Sometimes happens. कभी-कभी ऐसा भी होता है They're like, oh, I caught a big fish, and it's just a big old tire, कि बड़ी मछली पकड़ी है लेकिन एक बड़ा सा टायर पकड़ा जाता है बस। Yeah, you caught your future wife, she's a big old tire, आपकी आपकी भविष्य पत्नी है, ये आपका टायर। Then you can just roll down the street, फिर आप उसको रास्ते पे लुढ़का सकते हैं। This is my wife. ये मेरी पत्नी है। Don't judge. निर्णय मत कीजिए अपना। Don't be judgmental. ज़्यादा अपना निर्णय मत कीजिए इन चीज़ों के ऊपर। We have to be cool-headed. हमें ठंडा दिमाग रखना होगा। Everything is a science. सब कुछ एक विज्ञान है। Prabhupada said this is exacting science. तो बात कहते हैं ये एक विशेष विज्ञान है। And we have to pass all necessary tests and preliminary requirements. और हमें सारे जरूरी परीक्षा और जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। Otherwise, why Krishna will give you one of his devotees? वरना क्यों कृष्णा अपने एक भक्त को आपके पास भेजेंगे? Because then, if you're going to hurt the devotee, why Krishna will give you a devotee? अगर आप भक्त को चोट पहुंचाना चाहते हैं तो भगवान क्यों अपने भक्त को आपके पास भेजें? Right. So we have to be responsible. तो हमें थोड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी। We have to prove to be responsible. हमें दिखाना साबित करना होगा कि हम जिम्मेदार हैं। Otherwise, we're just coming trying to know, oh, he's my guru. I want some other material thing. वरना हम कहेंगे हाँ मुझे ये गुरु चाहिए और हम असल में कुछ भौतिक चीज चाहते हैं उनसे।
It's like our friend the other day, right? What happened to him, right? Wasn't he supposed to come? The one who wanted to go to America? He was meditating on it for like 10-15 years or something, right? तो वरना हमारे दोस्त का क्या हुआ जो यहाँ आने वाले थे 10-15 साल से अमेरिका जाने के लिए उनका सपना बनाए हुए थे वो वापस क्यों नहीं आए? What happened to that guy? उस व्यक्ति को क्या हुआ? As soon as I said you're not going to America, we never saw him again. जिस दिन मैंने कहा कि आपको हम अमेरिका नहीं लेके जा सकते उसके बाद से उनकी था नहीं यहाँ पे. Isn't that strange? तो ये थोड़ी विचित्र बात नहीं है? He said, no, I just want pure bhakti, love for Krishna. नहीं पहले मुझे शुद्ध भक्ति चाहिए कृष्ण के प्रति प्रेम. Okay, I have some desire about America. हाँ मेरी कुछ इच्छा भी है अमेरिका के प्रति. I'm meditating on it day and night for 15 years. दिन और रात में उस पे ध्यान लगा के रहता हूँ 15 सालों से ध्यान लगाया हूँ. Small little attachment is there. थोड़ा छोटी आसक्ति है मेरी उसमें. And he's asking, can you help me with that attachment? और मुझे पूछ रहे क्या आप मेरी मदद कर सकते हो उस I आसक्ति said, को you पूरा करने के लिए? cultivated it for 15 years. I met you 15 minutes ago. You want me to solve that problem? आपने 15 साल से वो इच्छाएं बनाई हुई थी. आप मुझे 15 मिनट पहले मिले और आप चाहते हैं मैं आपको समस्या का समाधान करूं. आप चाहते हैं एक बार में हो जाएगा. Right? You dug your ground with cement and wrought iron. Right? You have like a total like. You're sitting like in a military position, you know. I'll never get out of this position. आपने जो है सीमेंट डाल के रॉड डाल के अपनी स्थिति को पूरे ठोस बना लिया है और कभी आप उस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे. सेना के लिए आपने तैयारी कर ली है. Yeah, we're sitting with the enemy. We are the enemy. हम शत्रु के साथ ही और खुद ही शत्रु बन के बैठे हैं. Captured our intelligence, mind, and senses. शत्रु हमारे मन बुद्धि इंद्रिय We've को got पकड़ a के helmet बैठा है. on. और हमने हेलमेट लगा We're कर sitting behind a cement wall. और सीमेंट की दीवार के पीछे बैठे हुए हैं. With our guns shown. और हमारी बंदूक ताने हुए हैं. And then we're like, okay, Gurudev, what do you have to say? और हम गुरुदेव कह रहे हैं, गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं आप? That's not exactly like submissive or reception, you know ये what तो I mean? विनम्र भाव से श्रवण नहीं हुआ. I'm listening. मैं सुन रहा हूँ. And then we're like, what's he gonna say? You know? और हम बंदूक तान के कह रहे हैं कि क्या कहने वाले हैं. Well, can you at least like lift your helmet up a little bit? और गुरु कह रहे हैं कम से कम थोड़ा अपना हेलमेट ऊपर उठाइए कम से कम कान में कुछ जाएगा. कि इसके अंदर कुछ घुस पाएगा कान के अंदर. And then the most amazing thing, there was it doesn't work. और सबसे अद्भुत चीज अंत में ये कहते हैं ये काम नहीं करता. It's not working. ये काम नहीं कर रहा. Doesn't work. ये काम नहीं करता. I don't know if he's really a guru. मुझे पता नहीं असल में गुरु है या नहीं. I don't know about Krishna. मुझे पता नहीं कृष्णा के बारे में. I don't know about bhakti. मुझे भक्ति के बारे में पता नहीं. It's not working. ये काम नहीं करता. I wonder why it's not working. चिंता करनी चाहिए क्यों काम नहीं कर रहा. Understand why it's not working. समझिए क्यों काम नहीं कर रहा. We get big anchors underneath the mud with thick ropes. हमारे लंगर कीचड़ के अंदर फंसे हुए हैं और मोटी-मोटी रस्सियों से बंधे हुए हैं. And we're trying to row. और हम नाव आगे We're बढ़ाने का getting प्रयास कर रहे हैं. exhausted. और हम थकते जा रहे हैं. And then we're not moving anywhere. और हम कहीं आगे ही नहीं बढ़ रहे. They're like, it's not working. You और हम know? कह रहे हैं ये काम नहीं कर रहा. Everything looks the same. सब कुछ एक जैसा ही लग रहा है. It all looks the same. सब एक जैसा ही लग रहा है. I'm stuck. हम फंसे हुए हैं. And then like I'm sweating. और हम देख रहे हैं कि हमारे पसीने छूट रहे हैं. थक जा रहे हैं. My muscles are fatigued. मेरे मांस थकते जा रहे हैं. My brain is cooked. मेरा दिमाग जो है पक चुका है. And I didn't even move like 1 inch. और मैं 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ. What is going on here? यहाँ हो This क्या रहा है? doesn't work. ये काम नहीं करता. Because we don't understand what is the problem. क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि समस्या क्या How है. deep rooted is this problem? कितनी गहराई तक है ये समस्या. We don't even know what is the problem. हमें पता ही नहीं है समस्या है क्या. What to speak of solving the तो problem? समस्या का समाधान करने का क्या. We haven't even identified the problem. हमें अभी तक समस्या का वो We're not even calling it a problem. हम तो उसको समस्या कहे भी नहीं रहे. We're calling it our plan. हम उसको अपनी योजना बता रहे हैं. Doesn't work. ये काम नहीं कर रहा. I don't know if he's really my guru. मुझे पता नहीं असल में मेरे गुरु है या I नहीं. don't know if Krishna is hearing my chanting. मुझे पता नहीं है कृष्ण मेरे जप को सुन रहे हैं या नहीं. This process is, maybe not working. हो सकता है ये प्रक्रिया काम So नहीं कर all रही. of these doubts and thoughts will come to you. तो ये सारे संदेह और विचार आपके मन में आएंगे. Understand why
समझिए क्यों हो रहा है, Because of lust. इस काम की वजह से, And because it's covering our good intelligence, we're misunderstanding everything. और इसने हमारी सही बुद्धि को ढका हुआ है, हम सारी चीजों को गलत समझ रहे हैं, Because no good brain, क्योंकि अच्छी बुद्धि no नहीं, pure consciousness, no spiritual intelligence. कोई शुद्ध चेतना नहीं, आध्यात्मिक बुद्धि नहीं है, So whatever's being said, we're like saying opposite thing. और जो भी कहा जा रहा है हम उसको उल्टा समझ रहे हैं पूरी तरह से। I remember after listening to my Gurudev, and then I would hear everybody saying what Gurudev supposedly just said. और मुझे याद है जब हम गुरुदेव के क्लास के बाद बात कर रहे होते थे और सभी लोग वो बातें करने का प्रयास कर रहे थे जो गुरुदेव ने कहा, And I was thinking, that's not at all what Gurudev just said. और मैं सोच रहा होता था कि गुरुदेव ने तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं I was कहा। like, what universe are these people living in? मैं सोचता था ये किस ब्रह्मांड में रह रहे थे, They're saying opposite of what Gurudev just said. ये पूरी तरह से उल्टा कह रहे हैं जो अभी गुरुदेव ने कहा था, That was shocking to me. और मुझे सुन के बहुत But आश्चर्य that's हुआ, how they heard it. क्योंकि यही उन्होंने सुना। You see, they're getting cheated देखिए वो ठगे जा रहे थे, because lust is covering intelligence, mind, and senses. क्योंकि काम ने मन बुद्धि इंद्रिय को And ढका the हुआ था, false ego is telling, no, I understood everything. और मिथ्या अहंकार उनको कह रहा है कि हाँ मैंने सब कुछ सही तरीके से समझ लिया। There's a problem. ये समस्या है। Do you have any questions or any points on any of this? क्या किसी का कोई प्रश्न या कोई बात है इन सारे विषयों के ऊपर? Deva? Microphone, please. Hare Krishna, Gurudev. Haribo. In some places, does it say that envy is What? In some places, does it say that envy is the root of the problem? What is the root? Envy. Envy. Enviousness. तो प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं, कई बार ऐसा भी बताया गया है कि जो द्वेष है ये सारी समस्या का जड़ है। Why does Krishna get to enjoy? क्यों कृष्णा सिर्फ आनंद भोग रहे हैं? Why is he the supreme controller? क्यों वही सिर्फ परम नियंत्रण करता है? Why he's the center of everyone's attention? क्यों वो सभी का ध्यान केंद्र बिंदु है? So yes, we want to compete with Krishna. हाँ, हम कृष्णा के साथ प्रतियोगिता करना चाहते हैं। Right? We're all little mini Krishnas running around, हम छोटे छोटे कृष्णा बन के यहाँ दौड़ रहे हैं, all crashing into each other, और एक दूसरे से टक्कर खा रहे हैं, all trying to establish ourselves. सब खुद को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। That's why I'm laughing sometimes in India, the parents will say, this is my Krishna. इसलिए मैं कई बार मजाक करता हूँ कि कई बार भारत में लोग कहते हैं अपने बच्चे को, ये मेरा कृष्णा है, I love him so much, he's my little Krishna. मैं इसे इतना प्रेम करता हूँ, ये मेरा छोटा कृष्णा है। So then the little kids running around like, I'm Krishna, और जो छोटे बच्चे हैं वो इधर उधर भागते हैं तो वो सोचते हैं हाँ मैं कृष्ण हूँ। And then he goes to the school and then everybody's saying they're Krishna. और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो देखते हैं सभी बच्चे खुद को कृष्णा ही समझ रहे हैं, It's like a shock. तो उनको थोड़ा झटका लगता है। I've been running my whole house, I'm Krishna. मैं अपने घर में कृष्ण बन के रहता हूँ, मैं Everyone's कृष्ण paying हूँ, attention to me. सबको मुझ पे ध्यान देना चाहिए। Then they have this like a mini Krishna fighting, like who's the real Krishna? और फिर वो छोटे छोटे कृष्ण लड़ाई करते हैं कि असल कृष्ण कौन है। But it's the desire. लेकिन ये You इच्छा see, है we want to enjoy. कि हम भोग करना चाहते हैं, This is problem. ये समस्या है। Yeah? So does the envy come from lust? Huh? Does the envy come from lust? Does envy come from lust? Envy is only in the material world. तो क्या ये द्वेष काम से आता है? तो गुरुदेव बता रहे हैं ये द्वेष केवल भौतिक जगत में ही मौजूद है, It's not in the spiritual world. ये आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। So we're tatastha, we're appearing between spiritual world and material world. तो हम तटस्थ स्थान में हैं, भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच में। So therefore that jiva has to make a choice. तो जीव को एक फैसला लेना होता है, Do you want to go and serve with Krishna in spiritual world? या आप कृष्ण के पास जाके आध्यात्मिक जगत में उनकी सेवा Or करना you want चाहते to हैं, go and try to enjoy in material world? या फिर आप जाके भोग करना चाहते हैं भौतिक जगत में, Because we have a minute independence. क्योंकि हमारे पास एक अल्प स्वतंत्रता होती है।
But because we're not in a strong spiritual pure state of consciousness, क्योंकि हम एक शुद्ध और शक्तिशाली आध्यात्मिक चेतना में नहीं होते, therefore most are making wrong choice. इसलिए ज्यादातर लोग गलत फैसला लेते हैं। This is a very controversial topic. ये बहुत ही विवादास्पद विषय है। Because some people like to think, oh, we were with Krishna, we fell from Krishna Loka, Goloka Vrindavan. कि कुछ लोग सोचना चाहते हैं कि हम कृष्ण लोक में थे, गोलोक वृंदावन से हम यहाँ गिरे। But everything there is perfect and pure and eternal. लेकिन सब कुछ वहाँ पूर्ण है, नित्य है और शुद्ध है। There's no material modes of nature. कोई भी भौतिक प्रकृति वहाँ काम नहीं There's करती। no material desires. कोई भौतिक इच्छाएं वहाँ नहीं। They're fully satisfied and ever increasingly satisfied in their relationship with Krishna. वो पूर्ण रूप से संतुष्ट है और उनकी संतुष्टि बढ़ती ही जा रही है कृष्णा के साथ नित्य संबंध में। There's no sin, there's no sinful reaction. कोई पाप नहीं, पाप कर्म का There's प्रतिक्रिया, no sinful desire. कोई पाप कर्म की इच्छा There's नहीं। nothing but Krishna to be attracted to. वहाँ कुछ भी नहीं है कृष्ण के अलावा जिसके प्रति आकर्षण आपका हो सके। So where are you going to pick up some sinful desire to fall from that place to go to the material world? It makes no sense. तो कहाँ से आपको वो भौतिक इच्छा आपके अंदर आएगी और जिसकी वजह से आपको इस भौतिक जगत में पतन होना पड़ेगा। That means the spiritual world in Krishna Loka and Goloka Vrindavan is not perfect. There's no absolute spiritual eternal protection there. क्या इसका मतलब आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन पूर्ण जगह नहीं है, वहाँ कोई परम आश्रय और रक्षण नहीं है वहाँ से पतन ना होने के लिए। So all of a sudden you're serving Radha and Krishna and you're like, you know, why are they all serving Krishna? अचानक से आप राधा कृष्ण की वहाँ सेवा कर रहे हो, अचानक से आप सोचेंगे ओ सब लोग राधा कृष्ण की सेवा क्यों कर रहे हैं? Right? So somehow or other, one day I just became jealous and envious of Krishna. तो किसी तरह से एक दिन मेरे अंदर ईर्ष्या या द्वेष आ गया कृष्णा के प्रति And then I fell from that और place. फिर मैं वहाँ से नीचे गिर गया। That's what they want you, some people want you to think. ये चाहते हैं ज्यादातर लोग कि आप इस तरह से सोचें। So that means Maya is not even there, first of all. पहली बात तो माया वहाँ है ही नहीं। So how can Maya be more powerful than love for Krishna? तो कैसे माया कृष्ण प्रेम से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है? That means Maya is overcoming Krishna's supreme bhakti with his devotee. इसका मतलब माया परम भक्ति कृष्ण प्रेम भक्ति से ज्यादा परे है Somehow or other you just picked up some kind of asat sangha there. और किसी तरह से आप किसी तरह का सत्संग वहाँ पकड़ लेते हैं। You heard somebody had a doubt there. आप किसी ऐसे व्यक्ति से सुन लेते हैं जिसके पास संदेह है वहाँ। You had somebody suggest, hey, let's go smoke some cigarettes and have a drink, and somebody was hiding behind the mud hut. कोई जो है मिट्टी की झोपड़ी के पीछे छुपा है, आपको आके फिर कहेगा चलिए भौतिक जगत में जाके सिगरेट पीते हैं, थोड़ा कुछ नशा करते हैं नीचे जाकर। Maybe that's the guy who snuck in the window. I don't know. मुझे लगता है वही आदमी था जो खिड़की तोड़ के अंदर घुसा था। It can only be that guy, you know. वही आदमी हो सकता है। Otherwise, like everything's perfect, you know. वरना वहाँ सब कुछ पूर्ण है। And then you look and you're like, who's that guy in the background? फिर आप देखते हैं वो पीछे वो आदमी कौन छुपा है? And he's like black and dark. और वो काला अंधेरे में है। He's got like burglar tools. और उसने जो चोरी करने वाले सामान इकट्ठा करके रखे। Right, he's got all the bag of sinful activities. और सारे पाप कर्मों का थैला उसने रखा है। He's just looking to share his association with somebody. और वो ढूंढ रहा है किसके साथ अपना संग बांट सकता है। He wants to contaminate somebody. और किसी को तो दूषित करना चाहता है अपने संग से। That's all going in Goloka Vrindavan? Really? You think so? क्या ये सब गोलोक वृंदावन में हो रहा है? आप ऐसा सोचते हैं? Oh, what do you think? It's like a hole is there and then somebody like trips and just like falls in the hole? या फिर आपको ऐसा लगता है वहाँ कोई गड्ढा है, कोई वहाँ चल कर जाता है उस गड्ढे में गिर के नीचे भौतिक जगत में गिर जाता है। It's like a road crew, you know, the next day it's like, oh, we gotta cover up that hole. You know? जैसे रास्ते में कोई गड्ढा है और उसको ढकने का प्रयास किया जा रहा है। Couple eternal pure devotees just fell down into the material world. कुछ नित्य शुद्ध भक्त इस गड्ढे से भौतिक जगत में गिर गए हैं। Krishna said, I promise you, nobody ever perishes, you know, but we lost a few, you know. कृष्ण ने बताया कोई भी यहाँ से किसी का विनाश नहीं होता, हमने कुछ यहाँ खो दिया। कृष्ण ने कहा था। Does this make any sense? क्या इसका कोई मतलब बनता है?
madness. ये सब पागलपन They don't know the tattva. उनको तत्व ज्ञान नहीं। That's why Prabhupada said, in conclusion, nobody falls from Vaikuntha. इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है निष्कर्ष में कोई भी वैकुंठ से नीचे नहीं गिरता। So whatever choices we're making, especially for the material world, is definitely not from Vaikuntha platform. जो भी भौतिक जगत में हम फैसले ले रहे हैं ये अवश्य वैकुंठ स्तर से नहीं है। So we get to be the fallen souls. तो हम हैं वो जो पतित जीवात्माएं हैं। My Gurudev used to laugh. He said, "Well, you could have been a rock." मेरे गुरुदेव हंसते थे कहा करते थे आप तो एक पत्थर भी हो सकते थे। Like, what are you complaining about? At least you're not a rock. आप क्या शिकायत कर रहे हैं? कम से कम आप एक पत्थर नहीं है। Now you're born. Now you're in Mahaprabhu's movement. He's giving the highest thing to the least qualified people. तो आप महाप्रभु के आंदोलन में हैं सबसे ऊंची चीज सबसे कम योग्यवान व्यक्ति को दे रहे हैं। So he's making up for everything. What is your problem? तो वो हमारे लिए सब कुछ बना रहे हैं। आपकी समस्या क्या है? But there's people unlimitedly serving in Vaikuntha that are not in Goloka Vrindavan. जो असीमित समय से कृष्ण की सेवा वैकुंठ लोक में कर रहे हैं वो भी गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते। Try to understand it. तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। So the most fallen souls are being offered the highest position. तो सबसे पतित जीवात्माओं को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। Does that help? क्या आपकी मदद हुई? So enviousness is the nuclear waste. तो ये द्वेष एक तरह का परमाणु कचरा है। Like you can transform and purify lust and anger आप to काम love and fighting for Krishna. आप काम और क्रोध को परिवर्तित करके आध्यात्मिक रूप में कृष्ण के प्रति प्रेम और कृष्ण की सेवा के लिए क्रोध को युद्ध में लगा सकते हैं। But you cannot transform enviousness. लेकिन ये द्वेष को आप परिवर्तित नहीं कर That सकते। always remains the nuclear waste ये of the हमेशा material world. एक परमाणु कचरा बना रहेगा इस भौतिक जगत का। You can't get rid of it इससे आप छुटकारा नहीं पा सकते unless you get out of the material world, out of material consciousness. जब तक आप भौतिक चेतना से भौतिक जगत से बाहर नहीं निकल जाते। Is that all? क्या आपकी मदद हुई? Anything else? Anybody? कोई भी अन्य किसी के पास कोई अन्य प्रश्न? Yes? Srila Gurudeva, thank you very much for the class. I wanted to ask that unless conditioned soul will not hear from the pure devotee, real Krishna-katha about lust and everything else, then no chance to understand all these problems. Right? If we don't hear from Krishna and Krishna's pure devotees about devotional service, then we're in the complete Maya Jagat, we're in the darkness, ignorance. तो माता जी प्रश्न पूछ रही हैं कि जब तक कोई शुद्ध भक्त से शुद्ध हरि कथा श्रवण नहीं करता है तब तक ये काम और इस तरह के शत्रु के बारे में जान नहीं पाएगा। तो गुरुदेव बता रहे हैं जब तक कृष्ण के शुद्ध भक्त शुद्ध भक्ति के बारे में हमें बताएंगे नहीं तब तक हम पूरी तरह से अज्ञान में बने That means that रहेंगे। the mind, intelligence, senses, everything is controlled by Maya. यानी कि मन इंद्रिय और बुद्धि पूरी तरह से माया के Always नियंत्रण में। Maya's presentation we're listening to. हम आज हमेशा हम माया की प्रस्तुति को सुनते रहते And हैं। that is all surrender and service in Maya's family, इसका मतलब हम शरणागत सेवा कर रहे हैं माया के परिवार में, not Krishna's family, कृष्णा के परिवार में, not on soul, spiritual platform. आत्मा आध्यात्मिक स्तर पर है। So if we don't associate Bhagavan Bhakta Bhakti, they're not of the material world. जब हम भगवान भक्त भक्ति वो इस भौतिक जगत के नहीं हैं, So if we cannot have their association and hear from them, then first of all we cannot even purify our consciousness. अगर हम उनका संग करके उनसे श्रवण नहीं कर पाते हैं तो हम सबसे पहले तो अपनी चेतना को भी शुद्ध नहीं कर सकते। We cannot wake up to a spiritual consciousness हम अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत नहीं कर सकते because that takes mercy from Krishna and Krishna's devotee क्योंकि उसके लिए कृष्णा की कृपा और कृष्ण के भक्त की कृपा की जरूरत है and mercy of the Shastra और शास्त्र की कृपा की and जरूरत है Krishna in the form of prasadam, और कृष्णा प्रसाद के रूप में भी the holy name, और दिव्य नाम के रूप में in the deity form, और विग्रह के रूप में in the Shastra, शास्त्र के रूप में in the Guru Sadhu Vaishnavas, साधु वैष्णवों के रूप में in the Dham. धाम के रूप में These are all different manifestations of Krishna and Krishna's mercy. ये सब कृष्णा के ही और कृष्ण कृपा के अलग अलग So रूप if we don't get that association,
and hear nicely with the idea of purifying this contaminated consciousness, get free from this heart disease, then we just remain in ignorance. तो अगर हम इस तरीके से कृष्णा का संग नहीं कर पाते हैं और संग में श्रवण करके अपनी चेतना को शुद्ध नहीं कर पाते हैं, तो हमारे पास कोई मौका नहीं है इस अंधकार से, अज्ञान से बाहर निकलने Then we have faulty mind and intelligence. हमारे त्रुटिपूर्ण मन और इंद्रियां हैं Misunderstand everything. और हम सभी चीजें गलत समझते हैं Misunderstanding means a chaos, confusion. और हम गलत समझते हैं, इसका मतलब अफरा तफरी Then we उथल make all पुथल bad decisions और सारे हम गलत फैसले लेते हैं and maintain material sinful desires. और हम भौतिक इच्छाएं, भौतिक Get आसक्तियां a बनाए heavy punishment, a heavy karma pala. और भारी भारी दंड कर्मों का फल हमें भोगना And पड़ता then है we're shackled in cycle of birth and death. और फिर हम जन्म मृत्यु के चक्र में बंधन में बंध जाते हैं। That's the other option. ये हमारे पास दूसरा चुनाव है। So now it's up to us to say, okay, which option is probably best for us? तो अब हमें चुनाव करना है कि कौन सा विकल्प हमारे लिए सही है। And we're so degraded, we're like, well, this is the truth and probably should do it, but I have zero interest to do it. लेकिन हम A little bit into इतने it. हम इतने पतित हैं, हमें पता है कि ये सही है, इसको करना सही होगा, हमारे लिए रुचिकर होगा, लेकिन हमें उसमें कोई रुचि नहीं। Such amazing opportunity being offered to us. इतना अद्भुत मौका हमारे सामने दिया So जा रहा है। many guarantees Krishna is giving. कृष्णा हमें इतने सारे गारंटी दे रहे हैं And we're like, oh, I'm just trying to figure it out. और हम कह रहे हैं हाँ मैं पता लगाने का प्रयास करूँगा। Why we have an attitude like that? हमारा ये रवैया क्यों है? It's because of lust. इस काम की वजह से Too much attached on lustful material platforms. बहुत ज़्यादा आसक्ति है काम और भौतिक स्तर पे। That's what's holding us back ये हमें पीछे रोक कर रखा from हुआ being है attracted and taking it seriously. कि हम आकर्षित नहीं हो रहे हैं और गंभीरता से नहीं That's how serious impediment it is. ये इतनी गंभीर रुकावट है It's हमारे the सामने। greatest ये enemy. सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। It is the reason why we're here in the material world and why we're forced to stay in the material world. यही कारण है हम इस भौतिक जगत में हैं और हम बाध्य हैं इस भौतिक jगत में ही रहने के लिए। And the cause of our suffering condition, और ये हमारे सारे दुखों का कारण भी है and we still don't want to give it up. और फिर भी हम इसको त्याग नहीं करना चाहते। That's the definition of insanity. ये हमारे पागलपन की परिभाषा है। The very definition of insanity. ये है पागलपन की परिभाषा। Knowingly committing spiritual suicide. जानबूझकर आध्यात्मिक आत्महत्या कर रहे हैं। Sometimes we say, even if Krishna personally came and tried to preach to you, he still wouldn't convince you. एक बार कहते हैं कि कृष्णा खुद आकर अगर प्रचार करने का प्रयास करेंगे, तब भी ये आश्वस्त नहीं हो पाएंगे। Because you don't want to be convinced. क्योंकि वो आश्वस्त होना ही नहीं चाहते। Because of this crookedness, कपटता की वजह से, lack of simplicity. इस सरलता की कमी की वजह से, And this crookedness is because of this lust. और ये कपट है इस काम की वजह से। A deep-rooted problem. ये बहुत ही गंभीर समस्या है। So that is the work of devotee who wants to be devotee, is how to overcome this heart disease. तो ये वो भक्त या जो भक्त होना चाहते हैं उनका कार्य है कैसे इस हृदय रोग से काम से बाहर निकल सकते हैं। Regularly, daily, working on how to purify and get rid of all of this thing. कैसे नियमित रूप से काम करें, कैसे मैं इन सारी चीजों से मुक्त हो सकता हूँ, शुद्ध हो सकता हूँ। That's devotee. वो है भक्त। If we're not doing that work, we're not really devotee. We're not really acting as devotee. अगर हम ये काम नहीं कर रहे हैं तो हम असल में भक्त या भक्त होने का We're just प्रयास नहीं कर रहे maintaining हैं। material desires, material attachments, बस भौतिक आसक्तियाँ, भौतिक इच्छाएं बनाए हुए हैं। and chanting. हाँ हम जप कर रहे हैं, So this is a nam aparad, तो ये नाम अपराध है। not really Krishna consciousness. असल कृष्ण भावनामृत नहीं है। Okay, everyone, thank you very much for your kind धन्यवाद। attention. सभी का बहुत I ध्यानपूर्वक hope श्रवण this करने के लिए। makes us think about this topic, take it more seriously. मुझे लगता है अवश्य इस चर्चा ने हमें इस विषय के ऊपर गंभीरता Thank से you for सोचने का giving me मजबूर the किया होगा। opportunity to do my service. और धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया मेरी It's सेवा करने also के लिए। purifying my own heart and mind and consciousness. मुझे मेरे हृदय, मन और चेतना को शुद्ध करने की जरूरत है It's also good for me. और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। So thank you very much. धन्यवाद आप सभी का। Shri Gaurnitai ki, Srila Prabhupada ki, Srila Govinda-Swami, Srila Gurudev ki, Samveda Bhaktivedanta ki. We have some prasadam. The cookies are bad. कुकी The का return of the cookie monster. कुकी मॉन्स्टर का समय आ गया। Not the monster. Now, is this a new, what do you call it? A new, huh? Is this a new recipe? क्या ये नया
Did you remember it? You wrote it down? Okay. Because if it's good, you gotta write it down. अगर अच्छा बनाया हो तो कैसे क्या क्या डाला है सारा लिखा है। Here, have a cookie.